Hello guys, welcome back to another stream of Genshin Impact. Let's go. We are back in Genshin Impact and करते हैं यार आज चलो यार अलेथम की स्टोरी क्वेस्ट करते हैं मजा आएगा. लेट्स गो. सबसे पहले कमीशन करते हैं भाई. कमीशन करना पड़ेगा यार. यही करे जीवन में. मेरे कमीशन कौन करेगा फिर वो बात है. हेलो हेलो की हलचल. टट्टे आदमी. हे सुभजीत घोष, वेलकम टू स्ट्रीम. व्हाट्सएप, क्या हाल चाल. क्या किया भाई मैंने अभी. हैं. अब क्या कर दिया रे बाबा. भाई जब से जीवन में हार्ड डिस्क में ये गेम डाला है ना तब से एकदम स्लो हो गया है जीवन मेरा, बता रहा हूँ. जस्ट थिंक. मस्त. तेरा बता. एकदम मस्त यार. कैसी तबीयत यार. बुखार बुखार उतरा कि नहीं यार. भाई को बुखार हो गया यार, मेरे को सुनने में आया. उतरा क्या. 98. ये क्या बताया, क्या डॉक्टर ने क्या बोला. वायरल है या और कुछ है. कॉमन कोल्ड. ओके. गेट वेल सुन. दवाई बाई बाई खाओ. कड़वी कड़वी. मेरे को क्या. हे हे हे. Time to ring cutter. No, my sword. Not now. भाई कल बहुत दिनों के बाद ये गेम फोन में खेला. ओ माय गॉड. दर्द हो गया मेरे को. और उसके ऊपर ब्लिज़र्ड वाली डोमेन की मैंने फोन में. ओ भाई. दर्द किसको कहते हैं वो पता चला आज मेरे को. मतलब कल. आज नहीं. कल. मैं बोला बीसी कॉमन कॉमन कोल्ड में 105. हाँ ना. होता है बे. कोल्ड में कभी कभी. अरे. ऑडियो. भाई बहुत साउंड आ रहा था, कान फट गया मेरा. कान बोला. ठीक है कान बोला मैं, और कुछ नहीं बोला. जस्ट थिंग. कमीशन की तरह पे. भाई तू लड़की क्यों नहीं. हे मास्टर, वेलकम टू स्ट्रीम. व्हाट्सएप यार. आपके लिए लड़की बन जाऊं अभी मैं. सुजीत बीरो. हे. वेलकम टू स्ट्रीम. व्हाट्सएप. गुड मॉर्निंग. और बॉयज क्या चल रहा है. आप खेल रहे हो क्या. होंकाई स्टार रील. आज रात को उसकी भी स्ट्रीम करेंगे, डोंट वरी. उसमें भी आगे बढ़ेंगे. कुछ दिनों के लिए नो. नो वैलो बोल दिया मैंने. वैलो को नो बोल दिया है. टट्टे सब ओनली मोड में क्यों नहीं रखता. अरे चलेगा यार, जिसको आना है बात करके जाए यार. अगर उनको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करे, वरना ना करे. ठीक है यार, मेरे को कोई सब मतलब फर्क नहीं पड़ता. मेरे से बात करने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो. पर हाँ, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, वो बात अलग है. थैंक यू वेरी मच. नो फोंकाई मेरे लिए नहीं है. बोल रहा हूँ ट्राई करो एक बारी. मेरे को भी ऐसा लग रहा था, पर जो मजा है मेरे को खेलने में. अबे चौथा किधर गए भाई. क्या मैं अंधा हूँ या मेरे को सच में दिखाई नहीं दे रहा. वो इधर है. किधर से जाऊँ यार, इधर से जाता हूँ. मैं तो बोलता सब ओनली बोर्ड कर दे. नहीं यार चलेगा. इट्स ओके. आजा भाई.
मेरे को नंबर्स नहीं चाहिए यार, मेरे को सिर्फ लॉयल व्यूअर चाहिए जो मैं कोई भी गेम खेलूं मेरे को देखने आ जाए, समझ रहे हो, आपके जैसे। Gotcha. Stars, shine for me, my guide. Rain outlines your fate. Witness the see? Phew, ha. टू टू। कल गैंड फाट ग्राइंड किया 69 से 75 पीटी तक, नाहिडा मिल गई, नाइस। भाई क्या ही ग्राइंड करते हो रे तुम लोग, बताना पड़ेगा मेरे को, माय गॉड। मेरे को एक टट्टे ने चैलेंज किया 3.6 के एंड तक, मेरे अगर 100 पुल कर लेता हूँ 2 वेल्किन देगा। अभी 70 पुल्स है। ये अच्छा है बे, जोर बे। 2 वेल्किन, एक मेरे को दे दियो यार, 2 वेल्किन का तू क्या करेगा, क्या बोलते हो? मजाक कर रहा हूँ। कौन है भाई वो इतना अमीर? 5 पुल्स और मिलेंगे शॉप से, यस दोस्त है, ठीक है यार। 22 को पोटैटो चाहिए यार, ये ले भाई। क्या फ्रेंच फ्राइज बना रहा है भाई तू? हाँ, अगर बनाए तो मेरे को भी चखाना यार, मेरे को भी खाना है फ्रेंच फ्राइज यार, बहुत दिनों से खाया नहीं है यार। है, पानी पूरी ये पानी पूरी बनाई इसने तो, वाह। ए मेरे को भी खिला यार पानी पूरी। वैसे पानी पूरी अभी खाई थी 3-4 दिन पहले, वो बात अलग है, पर फिर भी यार। ए वाह, डिलीशियस पानी पूरी दे दिया साला। खुद के अकाउंट में 180 प्लस डेज का वेल्किन रहता है जी। मेरे को नहीं पता ना, मैं तो एफ टू पी प्लेयर हूँ, वेल्किन बेल्किन का मेरे को नहीं पता रहता भाई। Add Astra. Thank you for Add Astra. अरे वो नहीं हुआ क्या डिस्पैच? ओ भाई, अच्छा हाँ मैंने कल रात को ही तो रखा, ही। क्या ही करे यार, आर्टिफैक्ट फार्म करते हैं और क्या, थोड़े से जरूरत है जीवन में आर्टिफैक्ट्स की भी। पानी पूरी समोसा का रेसिपी चाहिए, है क्या, मिलता है क्या किधर? मिलता हो तो बताओ यार, लेके आते हैं। पानी पूरी का है शायद मेरे पास रेसिपी। छी, क्या छी बे? समोसा का नहीं है मेरे पास, पानी पूरी का रेसिपी है शायद मेरे पास। है, लग तो रहा है, फिर पता नहीं, देखना पड़ेगा। अरे कल रात को मैंने फोन में अपडेट किया गेम, ठीक है, 8 GB का। मैं आऊँ इसके बाद? आओ अगर आपके पास टाइम हो तो, मैं थोड़ा सा आर्टिफैक्ट फार्म लूँ, उसके फार्म कर लूँ, अगर टाइम ना हो तो आ जाओ। 8 GB का अपडेट किया मैंने फोन में गेम, फिर मेरा फोन हैंग हो गया। यार मेरे को कल थोड़ी सी आलस सी आ रही थी पीसी ऑन करने में, तो फिर मैंने फ़ोन में ही कर दिया, कमीशन किए और थोड़े से 1-2 डोमेन किए। फिर मैंने सोचा रहने दो भी फ़ोन में एनएच के, फिर कंडेंस बना के रख दिए। आ जाता हूँ, आ जाओ यार। टट्टा फ़ोन यार, क्या ही करे यार, मेरे को पोकेमॉन यूनाइट की भी स्ट्रीम करनी, पर फ़ोन ही नहीं काम करता। अरे आपको पता है पास्ट क्वेस्ट को डिलीट कर सकते हैं? नहीं यार, मतलब पता तो था पर कैसे करते वो नहीं पता है। फेंक दे फोन, ठीक है भाई, फिर मैं उससे कैसे बातें करूंगा? ओ माय गॉड, पहले वो होनी भी तो चाहिए। टूटा हुआ साज हूँ मैं। पास क्वेस्ट के कटसीन डिलीट हो सकते हैं, हाँ क्या, कैसे कर से? सेटिंग्स में जाके। सेटिंग रिसोर्स, वहां पर ऑप्शन होता है डिलीट का, हाँ क्या, ठीक है, आज फोन में बैठ के यही काम करूंगा मैं। पीसी में भी होता है,
इधर है रिसोर्सेज। अच्छा ये तो यहाँ पे तो सिर्फ स्टार्ट वेरिफिकेशन ही है। खुद को नहीं पता वैसे है जी। ये 5 प्रीमोज मिले मेरे को। मेरा कल 8 GB खाली हुआ। फोन में होता है सिर्फ? अच्छा फोन में होता है, ओके। तो आज फोन में बैठ के यही काम करना है मेरे को। आज दोपहर का काम मिल गया मेरे को। यही काम करूंगा आज तो मैं। यार वैसे देखा जाए तो होंकाई स्टार रील भी कल मैं फोन में खेला, वो अच्छी चल रही है। क्योंकि अभी वो छोटी है ना गेम, उतनी बड़ी है नहीं। मीडियम सेटिंग्स में चल रही थी भाई कल तो। फिर उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ओके। अच्छा है भाई, ये ऑप्शन डालना ही चाहिए क्योंकि अभी गेम बहुत बड़ी होगी भाई। अबे स्ट्रीम का क्वालिटी कैसा दिख रहा है? ठीक है और बढ़ाना चाहिए, क्या बोलते हो तुम लोग? ऑनकाई फोन में बहुत स्मूथ है, हाँ ना। भाई मैं तो कल वो कर रहा था, अर्ता का वो जो सिम्युलेटेड यूनिवर्स वाला है वो खत्म कर रहा था। ठीक है, कल 2 घंटे बचे थे सिर्फ और वो खत्म कर रहा था मैं। क्या किया मैंने, सिर्फ खोल के रख दिया फिर ऑटो पे लगा दिया। शांति से मैच देख रहा था फिर। खुद ही मर रहे थे लोग, मजा आ गया। मस्त ऑप्शन है। 1080 है तो कितना इंक्रीज होगा? नहीं यार बिटरेट इंक्रीज कर सकता हूँ वैसे। मेरे बिटरेट 10,000 पे, फिर भी बीटीएस भाई बोल रहे थे कि क्वालिटी थोड़ी कम दिख रही है। तो मैं थोड़ी क्वालिटी अभी बढ़ा सकता हूँ अगर लगे तो। फिर मेरा पर पीसी हैंग करने लग जाए वो बात अलग है, वो देखना पड़ेगा थोड़ा। अगर ठीक है तो ठीक है, अच्छी ही दिख रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इन केस अगर आप दूसरे स्ट्रीमर्स की लोग की देखते हो और लगता है कि उससे थोड़ी कम है तो मैं बढ़ा सकता हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। बढ़ा थोड़ी टाइम के लिए। अच्छा ठीक है, आज रात को शायद आऊँगा ना, तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके आऊँगा, ठीक है सेटिंग्स में। फिर बताइए मेरे को। मुझे क्या, मैं तो 240 के ऊपर देखता। मोबाइल डेटा। अबे बीटीएस भाई कल स्ट्रीम कर रहे थे पता है, तो उसके अगले दिन रात को हम देख रहे थे। बीटीएस भाई बोल रहे ट्विच पर स्ट्रीम करो, ठीक है। बीटीएस भाई ने टेस्ट स्ट्रीम चालू किया ट्विच पे। ट्विच पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, 1080 पीप का। फिर हमको तो पता नहीं है एक ही ऑप्शन क्यों आ रहा है। फिर हमने थोड़ा सा रिसर्च किया कि एक ही ऑप्शन क्यों आ रहा है। ट्विच वाले बोलते अगर आप लोग पार्टनरशिप नहीं लेते हो तो एक ही ऑप्शन आएगा। मैंने बोला बेचारे मोबाइल डेटा वाले तो देख ही नहीं पाएंगे, बीटीएस भाई रहने दो। बैक टू यूट्यूब। ट्विच पे एक ही ऑप्शन है, हाँ ना। वो बोलते पार्टनरशिप ले लो तो ही अदर ऑप्शन मिलेंगे, वरना एक ही ऑप्शन 1080। और अबे ये यूट्यूब पे क्या ग्लिच है पता है? मतलब ग्लिच तो नहीं बोल सकते, पर इसमें क्या सिस्टम है, फोन में 480p नहीं दिखता। दिखता है क्या तुम लोगों को? मेरी स्ट्रीम पे भी नहीं दिखता 480p, दिखता है क्या? Take it easy. वाईटी चू है, हाँ ना भाई। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते यार। पर ट्विच पे क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। मतलब हमने ट्राई किया था 6000 बिटरेट पे ट्विच पे स्ट्रीम करने का और 6000 बिटरेट पे वाईटी पे स्ट्रीम करने का, जमीन आसमान का फर्क था भाई क्वालिटी में। वो बात है, ट्विच पे क्वालिटी अच्छी आती है, वाईटी पे पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है। रेंडर का प्रॉब्लम है कि कुछ ही तो प्रॉब्लम है भाई, क्वालिटी इतनी अच्छी आती नहीं है। ट्विच पे तो सॉन्ग्स भी बजा सकते हैं मस्त बैकग्राउंड में, वाईटी पे तो वो भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा स्कैम है भाई, मतलब स्कैम तो नहीं बोल Take सकते, it पर easy. थोड़ी सी गाइडलाइंस अलग है।
फिर लोगों पे जाना पड़ेगा सॉन्ग बजाने के लिए, क्या बोलते हो? मजा आता है बे सॉन्ग सुनने में। अभी तो अच्छे अच्छे मैशअप्स और रिमिक्स और वो सब आ रहे हैं। टू टू ट्विच पे क्वालिटी भी अच्छी है, और अगर कोई देख रहे है उसकी उसकी इंटरनेट कम यूज होगी वाईटी से। ओ, Take it easy. इंटरनेट भी कम यूज होती है, वो नहीं पता था। पर ट्विच में एक बीटी है कि उसको Take पीछे it नहीं कर easy. सकते यार तुम स्ट्रीम को। वो एक बहुत ही गंदी बीटी है ट्विच पे। अबे मेरा माउस का राइट क्लिक बिगड़ गया, पता है? सॉरी, लेफ्ट क्लिक। डबल क्लिक होता है भाई एक बार क्लिक करने पे। तू देख 1080 में ट्विच पे आराम से देख पाएगा मोबाइल डेटा पे। हाँ क्या, अच्छी बात है यार। Take it easy. ये लोग यही करते हैं ना ट्विच पे। क्या करते हैं ये लोग? स्ट्रीम चालू करते हैं और फिर उसकी हाईलाइट डाल के यूट्यूब पे डाल देते हैं इजी पे। उनका काम बहुत ही इजी है। ट्विच पे स्ट्रीम करो, एडिटर मस्त एडिट कर देगा वीडियो, और वाईटी पे डाल दो उसकी हाईलाइट्स। इजी पे दोनों पैरेलल चलता है उनका। ये मस्त चीज लगती है मेरे को, एकदम इजी। अबे Take it हील हो easy. गई बे, बताओ। आज टट्टे कॉलेज वाले सेमिनार ले रहे हैं। हाँ क्या, तो तू नहीं गया या अभी जाना है? वही, हाँ ना। मैं बोला पक बीसी मैं नहीं जाएगा। वैसे भी तुम तो बीमार हो, बोल सकते हो। मैं तो बीमार था भाई, मैं क्यों आऊँ भाई कॉलेज, ऐसा बोल सकते हो तुम तो। 2 दिन से 103 बुखार है मेरे को। ओ माय गॉड। यार मेरा क्या सीन हुआ पता है आज? कल शाम को वही 1 हफ्ते की छुट्टी लेगा डॉक्टर का लेटर भी है, पक्की की बात है बे। मेरा क्या सीन हुआ, कल कल शाम को मेरे फ्रेंड का मैसेज आता है, ठीक है कल कॉलेज आने वाला है ऐसा करके। मैंने बोला सब लोग आ रहे तो मैं आ रहा हूँ, वरना नहीं आऊँगा। तो फिर उसका मैसेज आया थोड़ी देर बाद कि कल आना है। मैंने बोला ठीक है आता हूँ। फिर आज सुबह में उठा, सुबह के 6:30 बजे बंदा मैसेज करके बोलता है आज नहीं आना है। मैंने बोला ठीक है यार, कल कल रात को ही बोल देता यार, मैं उठता नहीं। फिर सोचा मैंने अभी उठ ही गया तो करूँ क्या, टाइम पास करना पड़ेगा। फिर सोचा टाइम पास कर लूँ, उससे अच्छा स्ट्रीम कर लूँ जाके। तो स्ट्रीम करने आ गया। फिर एक और बीटी, सोचा स्ट्रीम कौन सी करूँ, मस्त प्लान है आना। फिर मैंने सोचा कि स्ट्रीम कौन सी करूँ बे, A pleasure to होंकाई be with. करूँ, वेलो करूँ, गेंशिन करूँ, क्या करूँ? फिर मेरे को याद आया अचानक से इवेंट करनी बाकी है भाई इस बार की। ठीक है, मैंने सोचा इवेंट बाकी है, इवेंट करना पड़ेगा। फिर देखा इवेंट जाके, मतलब
लास्ट टाइम देखा था ना नाहिडा के स्टोरी क्वेस्ट के बाद कि इवेंट करने के लिए तो आलेतम की स्टोरी क्वेस्ट करनी पड़ेगी। मैं कहता ये बात हो गई भाई, अभी तो आलेतम की स्टोरी क्वेस्ट करूंगा। काश नाहिडा से क्रिस्टल फ्लाई पकड़ पाते। हाँ ना भाई, कितना जीवन इजी हो जाता इससे करके सब क्रिस्टल फ्लाइज। बात तो है। ए मेरी आया का लाइफ सपोर्ट पे क्यों है पे? कब मार खा के आया मैं आयका से? Can't sleep? मैं तो 2-3 दिन से वैलो नहीं खेला। मैं भी नहीं खेला यार। जैनिक सुबाई का रोज मैसेज आता है वैलो कोई मैं हर बीटेस भाई बोलते हैं नो वैलो फॉर सम डेज अभी थोड़ा सा होंकाई और गेंशिन में, वैसे गेंशिन में कोई ग्राइंड नहीं चल रहा पर होंकाई में ग्राइंड चल रहा है। अबे नेक्स्ट बैनर कौन सा आ रहा है किसको पता है क्या? आ लेते में आ रहा है शायद। हाँ क्या पक्की बात है। हुआ क्या वैलो में जो नहीं खेल रहा? नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही नहीं खेल रहा। टाइम ही नहीं है ना। होंकाई स्ट्रीम कर रहा हूँ ना 2-3 दिन से बड़ी बड़ी। वैसे बड़ी बड़ी में 4 घंटे की स्ट्रीम है पर फिर भी यार काजुआ आलेतम का न्यूज आ रहा है। ओके हाँ योइमिया आलेतम मीको और काजुआ। ओके अबे योइमिया का बैनर कितनी बार आएगा भाई? अभी अभी तो 3 बार आके गया यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। मीन वाइल यूला फैंस बीच यार, दर्द हो गया मेरे को उनके लिए। काजुआ ठीक है, काजुआ बहुत टाइम से नहीं आया है। आलेतम भी अभी अभी आके गया। योइमिया तो 3 बार आके गई भाई, 3 या 4 बार आई थिंक। नहीं 3 बार, ये चौथी बार होगी शायद, पता नहीं। यूला कौन है अब पक्की बात है बे, बेचारे लोग कब से यूला के लिए सेव कर रहे हैं, यूला आ ही नहीं रही है। योइमिया दोनों पर बीच में फंस गई है, दोनों बार बीच में फंस गई। हाँ क्या अबे आलेतम का गेम स्टाइल इतना पसंद नहीं मेरे को, तो मैं तो पुल ना करूं भाई आलेतम पे। वही तो बोल रहा है, कितने बार देंगे योइमिया, देंगे टट्टे लोग। ठीक है भाई, योइमिया मेन ऐसा बोल दे तो फिर क्या ही चाहिए जीवन में। हाँ क्या योइमिया फॉर लाइफ हेल्यू, ऐसा कुछ सुनने में आया था मेरे को। योइमिया पे कर ले। नहीं यार, या तो जोंगली या तो कोकोमी, उसके अलावा नहीं कर रहा मैं तो भाई। मी आ लेते मैं, माफ करो यार, माफ करो, मेरे को पता नहीं था रे बाबा, माफ करो यार। मेरे को पसंद नहीं आया, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अबे योइमिया मेन हूँ पर कितनी बार देंगे रीरन? ए मीको पे पुल कर लूँ क्या? हाइपर ब्लूम और वो सब में काम आएगी ना मीको? नहीं यार छोड़ो यार, फिसलूंगा नहीं मैं। कोकोमी या तो जोंगली बहुत जरूरत है। अच्छा यहाँ से तो ले लिया था कल रात को, ही भूल गया। अबे यार क्वेस्ट में भेज दिया रे बाबा। How's everything going with your thesis? आ रहा था भाई इतनी रेंचो। अबे ये तो रेंचो है। 3 इडियट्स रियल आईडी से आ। फिशल बिल्ड कर ले, ऑलमोस्ट सेम है। हाँ फिशल तो बिल्ड होगी थोड़ी थोड़ी सी आपको आ लेते हैं पसंद नहीं है लेकिन थंबनेल में वही है। अरे वो उसकी स्टोरी क्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए उसका थंबनेल डाला है। मीको और फिशल। I should be able to publish पिया। this month. अबे अबे सच में 3 इडियट्स है क्या? I was worried that I'd have to stop my work on it.
Thankfully, that didn't come to pass. डोंट टेल मी मेरे को फरहान और राजू भी आ जाएंगे अभी। Well, Azar was one of your भाई thesis लिटरली advisors. इसका नाम रेंचो Honestly, I है। was afraid that you might have gotten dragged down as well. How did things get settled? The newly appointed acting Grand Sage reviewed all of our projects and gave us permission to continue our research. Acting Grand Sage? That sounds like a new thing. किसी ने कुछ नहीं देखा? क्या नहीं देखा? Yeah, I heard that selecting new sages has been taking some time, so he's just filling in. But it's all thanks to him that our research results weren't jeopardized. Once my paper is published, I'm definitely giving myself a long vacation and getting some much-needed rest. Mondstadt sounds like a good idea. ये सब लोग घूमने मॉन्स्टेड ही जाते, देख रहे हो तुम लोग? कुछ तो बात है बे मॉन्स्टेड में। Really out of their minds, making ए राजकुमार, them the acting grand sage? क्या हम इसको राजू का रेफरेंस ले सकते हैं ड्यूट? Easy, Professor. और ये रेहान क्या फरहान है? Just going by qualifications. भाई ये no थ्री one इडियट्स है, knows पक्की बात three है। of ये them आलेतम का followers. स्टोरी क्वेस्ट नहीं है, ये थ्री I don't इडियट्स know है। why they picked a stripper मैं नहीं named मानता भाई। him. Fool! Do you think I'm angry because I wasn't chosen for the position? No! It's because I don't understand why they chose him! He was one of my students. और He rarely attended ईगो बीच class. में आ गया When अंकल I जी का। asked him about it, he retorted that self-study was better use of his time. What brazen arrogance! मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे कैसे निकल गया, ऐसा For बोल the रहे हैं। academia to have him as the acting grand sage? Professor, don't get so worked up. I'll go get you some water. Psst. Want to hear a secret? रेजा I've heard the new खानी, acting Grand Sage is from Haravatar. ठीक है, ये नाम थोड़ा सा Really? अलग है। Who is it? Someone named Alhaitham. Never met him myself, but he's a real भाई hot इन लोगों topic ने right देखा ही now. नहीं है आलेथम Lots को। of things ये being क्या said बात about हो गई him. भाई? Hard to tell what's true and what isn't. यार though. मतलब सुमेरु में तो वेल नोन पर्सन है ना आलेथम तो। There's also a Vahumana scholar who's been in the spotlight recently. They say that he's a likely pick to be one of the next sages. Oh, is he teaching any courses? Maybe we should drop by. अरे एक भाई नाम का बंदा है, क्या बात कर रहे हो? भाई नाम है उसका? Oh my god. Wow. News of Alhaitham being the acting Grand Sage sure spread fast. Some people don't know who he is, though. Guess he's less famous than Paimon Dodge. हाँ ना भाई, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। Some people are saying good things and others bad. Especially that old guy just now. He really doesn't like Alhaitham. अब कौन आ गया बे? ये कौन है बे? जल्दी बताओ भाई। Hey, are you okay? You don't look too good. The Matra. हैं? Matra? I'm Ilias. I इलियास, have to talk अच्छा। to a Matra about something important. In the state इसके हालत तो खराब लग रहे You हैं। shouldn't push yourself. गांजा फूंक के आए लग रहा है मेरे को। Why don't you tell us what happened and we'll pass on your message to Amatra? No, I have to tell them myself. They are the only ones I can trust. Sorry, can you lend me your arm? This is an important matter. Failure is not an option. Since you put it that way, fine. We'll take you to Amatra. अबे मेरे को नहीं जाना है अभी मात्रा के पास, रुक जा भाई। मैं तो आर्टिफैक्ट फार्म कर रहा था भाई, तो गलती से आ गया इधर। We promised to take him to Amatra, but we don't know that many, do we? Oh, wait. Sino should be back at the academia. Let's go find him. ठीक है यार, जाता हूँ यार, थोड़े से आर्टिफैक्ट ले लूँ पहले। आर्टिफैक्ट इज इम्पोर्टेंट ड्यूड, ये सब तो चलता रहेगा जीवन में। अबे उस ब्रोनिया के बाल पीछे से ऐसे ही लगते हैं ना? देखा है क्या ब्रोनिया को? आलेतम का स्टोरी में मस्त कट सीन है। हाँ क्या यार, कट सीन तो नाहिडा के स्टोरी क्वेस्ट में भी मस्त था बे भाई। गेंशिन के कट सीन ज्यादा बेटर है होंकाई से, वो बात है। कट सीन में तो गेंशिन ओफी है भाई।
चलो बाय जा रहा. ओके, hope you enjoy this stream. See you soon. Bye bye. Game's up. Fun is over. You are not welcome here. Quietly now. Rain cutter. Huh? The night is cold. Huh? Mm, 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 mm. अबे आज नाइट बॉट नहीं आया क्या? या आया है? देखना जरा. Huh? Take it easy. Yeah. टू 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 टू. Take it easy. एक ही मिला बे. माइनिंग होगी फिर इधर ही. इजी बे. वही क्या करना था मेरे को. अच्छा हाँ, ये यूज नहीं किया मैंने काफी दिन से. So sleepy. I've been waiting for you for ages. क्या डरली इस मेरे बाबा. ये डाल दे क्या? थोड़े से ये डालते, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए. कुछ नहीं मिला बे. स्कैम हो गया सी. टू 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 टू. Can't sleep? Let's go. Chivalry will never die. और कमीशन. अरे कमीशन नहीं, रेपुटेशन से पैसे उठा लेते थोड़े से. पैसे भी जरूरत है ना. Let's go see. इम्यून टू जियो. ठीक है यार, जियो की तो जरूरत नहीं मेरे को. अभी मार के आता हूँ. Things are about to get dicey. Busted. Let me weave you a verse. Know my sword. My guiding stars. Don't be scared.
इम्यून टू पायरो, अरे यार पायरो से इम्यून कर दिया बे। I see everything. The Temple of Wisdom. Absurd illusion shattered. Rain cutter. Huh? Huh. Here comes the catch. Gotcha. मैं चाय बना के आया। ओके चाय बनाओ चाय बनाओ। भूख लग रही जोर से यार, ऐसा मत बोलो यार, मेरे को भी लग जाएगी फिर मैं क्या करूँ, स्ट्रीम बंद के चला जाऊँ बंद करके। अब भूख की बात मत करो यार, मेरे को भी लग जाएगी। क्रायो टू 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 टू। हेलो आशीष, वेलकम टू स्ट्रीम, व्हाट्सएप, क्या हाल चाल। हेलो। कल टोस्ट लाया, आज चाय में डुबा डुबा के खाऊंगा। ठीक है यार। Take it easy. वही दिन में कितने आवर खेलते हो आप हैं जी, मतलब ज्यादा नहीं खेलता यार दिन में मैं तो, वो तो वीकेंड और ये टाइम में फ्री टाइम में खेलता हूँ मैं तो भाई। हाँ Shine down. Rain outlines your fate. Let me weave you a verse. Things are about to get dicey. Now you shall perish. ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया ड्यूड। ऐसे ही पूछ रहा था, कोई बात नहीं बे। नहीं इतना ज्यादा नहीं खेलता क्योंकि कॉलेज भी जाना होता है, फिर रात को ही खेलता हूँ, पर आज छुट्टी थी तो आ गया मैं, और वीकेंड्स में खेलते हैं और कुछ नहीं। डोमेन्स कर लेते थोड़ी सी, फिर करते आलहेतम की स्टोरी क्वेस्ट, लेट्स गो। कोई नई टीम ट्राई करो क्या, कर सकते हैं। बेनेट किधर है, ए बेनेट किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा। ये रहा। You want me on your team? और शैंगलिंग को ले लो। ले तो सकता हूँ, I can't wait any longer. ट्राई करते हैं। जला जला के मारो क्या। डीपीएस नाहिडा को ईएम दू की नहीं, कितना दू। डीपीएस नाहिडा को है ना, आप सिर्फ सैंड पकड़ा सकते हो ईएम वाला, और वो भी आपके पास अच्छा क्रिट डैमेज और क्रिट रेट हो तो। मैंने तो अभी एलिमेंटल मास्टरी बिल्ड ही है, पर डीपीएस आपको नाहिडा बनाना हो तो यार एक ईएम सैंड दे सकते हो, और बाकी जो सबस्टेट में आए वही, बाकी क्रिट रेट क्रिट डैमेज में फोकस करना पड़ेगा। लाइक ईएम, टेंडो डैमेज बोनस, और क्रिट डैमेज और क्रिट रेट जो आपको ज़रूरत हो वो, और वेपन में भी क्रिट डैमेज या वीड सी थी या कुछ और जो अच्छा सा वेपन हो वो। मैंने तो ईएम बिल्ड ही किया, तो अभी तो सैक्रिफिशियल ही है।
अबे इसका वेपन बदलना पड़ेगा ना मेरे को। फिर गया ड्रैगन भी नहीं चलेगा पीछे। छोड़ो यार, बोर लग रहा है मेरे को वेपन। क्या ये टीम मार पाएगी मेरे को देखना है, मतलब हूताओ वाली टीम से जल्दी मार पाएगी वो देखना है। Sharing my knowledge. Nice and spicy. अबे किसी की एनर्जी रेडी नहीं है, ये क्या बात होगी। I always bounce मेरा back. भाई, मेरा भाई कुट गया रे बाबा, कुट गया कुट गया कुट गया कुट गया। Out of the frying pan, into the fire. Teamwork is dreamwork. Inazuma shines eternal. यार मार तो पाती है, अच्छी टीम है। क्या ठीक है, विटसित और सैक्रिफिशियल फ्रैगमेंट, विटसित ठीक है शायद। हाँ डीपीएस बारबरा, अरे बारबरा सॉरी डीपीएस नाहिडा बना रहे हो तो भाई विटसित ही देना पड़ेगा। अगर ईएम बिल्ड कर रहे हो तो ही ये तो। छी भाई ये क्या दे रहे मेरे को, समझ रहे हो। अबे इसकी एनर्जी की लगी पड़ी है। ओ ऑलमोस्ट फील हो गई, नाइस। Nice and spicy. The Temple of Wisdom. Everybody stand back. Eat this. Torn to oblivion. अबे कूद गया बे ये पागल। ए नहीं, Out of the frying pan, into. I'm going in. मर जाती हम ना। Make yourselves at home. Brace you. हक दिया बे, मजा आ गया। Off we go. Adventure time. बस कर भाई, बस कर भाई, जीवन में बस कर दे मेरे। Teamwork is dreamwork. You're toast. मर जाएगी ये तो ऐसे ही। छोड़ो यार, क्या ही मार है इसको तो भाई। Everyone hold hands. गुली कर दूं क्या इसको? इजी। DPS EMs and Dendroglobulate or critical damage which is a lot player. Yes. 60-180 ratio with 400 EM. Recommend तो नहीं करूँगा but यही DPS build है। Recommend तो मैं भी नहीं करूँगा यार। अबे हाइड्रो डैमेज बोनस ठीक है यार, रख लेता हूँ। Adventure time. Hey. Boba, get them. Off we go. बस कर भाई, बस कर दे भाई मेरे। Stand back. Inazuma shines eternal. अबे मरा नहीं है, मर जा भाई। I see everything. आपके सैंगलिंग और बेनेट का ईआर कितना है? अराउंड 200। ओ भाई पीस मिला बे, पीस मिला, अच्छा वाला पीस मिला बे, जिंदगी में पहली बार। देखो बेनिक का 184 है और इसका अभी 200 किया मैंने। बेनी का मैंने कुछ भी बिल्ड लगाया हुआ पर मेरा बिल्ड देखोगे बेनी का हंस दोगे। देखा बताता हूँ, एनर्जी रिचार्ज, पायरो डैमेज बोनस और क्रिट रेट। डीपीएस बेनी और व्हाट।
रोल कर, सबको पता है क्या हल जाएगा। करता हूँ यार, रुको, वो भी करते हैं। Shine down. The Temple of Wisdom. I'm going in. You're toast. Let's light it up. Now you shall perish. यार अभी तो ये डोमेन के लिए यही टीम रखूंगा पे मैं, कि मस्त टीम है यार। क्या हुताओ वाली टीम से भी जल्दी खत्म करती बे ये टीम, एकदम फटाफट। पर सबकी एनर्जी होनी चाहिए, वो बात है। एक के बाद एक अल्ट मारनी पड़ी। फिशल पुल करूं क्या नाहिडा के लिए? कर सकते हो। फिशल फिशल है क्या अभी? मैंने तो बैनर ही नहीं देखा है। नहीं है। कुकी कर सकते हो नाहिडा के लिए। नाहिडा और कुकी की टीम बहुत ही अच्छी चलती है, बता रहा हूँ। अगर आपके पास कुकी है तो फिशल रहने दो। Illusion shattered. Sharing my knowledge. We go. Everybody stand back. अबे क्रिट नहीं मारा हरामजादे ने। At the frying pan. Inazuma shines eternal. अबे इसकी शील्ड टूटी नहीं। Teamwork is dreamwork. Nice and spicy. There is no escape. कुकी है फिशल नेक बैनर में 2 दिन में। नहीं नहीं, कुकी बेटर है, बहुत बेटर है। फिशल अगर नाहिडा के लिए यूज करनी है तो रहने दो भाई, बता रहा हूँ। दूसरी टीम में काम आती है फिशल, पर नाहिडा के टीम के लिए तो नहीं। ईएम नाहिडा बिल्ड करो, ईएम कुकी बिल्ड करो, हाइपर ब्लूम यूज करो, इजी है। गाइस, जीवन में एक बार यहाँ पे रोल करना तो बनता है अच्छा आर्टिफैक्ट को, क्या बोलते हो? ये टीम ट्राई करूंगा। आपकी शैंगलिंग बेनेट कुकी नहीं, हाइपर ब्लूम यूज करो, ये मत करो, ये तो मैंने ऐसे ही यूज किया। नाइडा के साथ जिंदगी में मत यूज करो यार, बेकार है, बेकार ही है भाई। मेरी राइडन C2 है तभी यूज कर रहा था मैं। नहीं देखो मैं बताता हूँ, कोई भी 2 हाइड्रो ले लो, लाइक येलान शिंगचो हो तो येलान शिंगचो ले लो, फिर ईएम ईएम कुकी ले लो और ईएम नाहिडा ले लो, इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही मर जाएंगे लोग, बता रहा हूँ। ठीक है, जिंदगी में ये टीम मत यूज कर देना, डिप्रेशन में आ जाओगे। एनहेंस करे क्या? अगर ये चौथा वाला डिफेंस निकला तो मैं नहीं पुल कर रहा, मतलब रोल नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये चौथा वाला डिफेंस निकला तो मैं रोल नहीं करूंगा भाई इसको, क्योंकि मेरे को पता है सब डिफेंस में ही जाने वाला है फिर। हे भगवान, क्यों परेशान करते हो मेरे को रे बाबा? तो आर्टिफैक्ट्स है नहीं भाई, डालो, ये डाल देता हूँ। ओए क्रिट्रेट गया बे, विनेबल है, विनेबल है यार। एक चांस तो ये आर्टिफैक्ट भी डिजर्व करता है, क्या बोलते हो? हाइपर ब्लूम ही करता हूँ, बेडू कुकी बारबरा, दूसरा हाइड्रो नहीं है, न्यू प्लेयर हो। अच्छा न्यू प्लेयर हो, ठीक है। कोकोमी को पुल कर सकते हो, येलान आए तो येलान को कर सकते हो, और शिंगचो को पुल करो, शिंगचो इज वेरी वेरी गुड फॉर हाइपर ब्लूम।
एक बार शिंगचो येलान का कॉम्बो आ गया ना आपके पास, फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी जीवन में, बता रहा हूँ। अभी इतना मेटा में चल रहे ना दोनों। ये क्रिट यार, क्रिट डैमेज यार, क्रिटेड में गया तो और आगे पुल करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ठीक है, पुल नहीं रोल करूंगा, माफ करो यार। हाइपर ब्लूम कैसे डेंड्रो ही नहीं है भाई? होगी ना भाई, नाहिडा ही होगी ना, नाहिडा है उनके पास ऑब्वियसली भाई। क्या सुअजित यार, अबे फिर से क्रिट रेट। कौन सा संडास आर्टिफैक्ट डालू? ये डाल देता हूँ भाई, पर 20 का है यार, नहीं डाल सकता। ये डाल दूं क्या? डाल सकता हूँ। 17% डिफेंस का कहाँ पे लेके जाऊं मैं? अबे भाई ये क्या चल रहा है? इतना ज्यादा क्रिट रेट रखे किधर जाऊं मैं? आया का प्लेयर हूँ भाई, हेलो। शिंगचू कहाँ से मिलेगा मेरे को? आया का बैनर से बेनेट मिल गया। बेनेट अच्छा है, पर वो हाइपर ब्लूम टीम के लिए मत यूज करो भाई। बेनेट इज बेस्ट सपोर्ट इन द गेम, ठीक है, याद रखना। क्या लगता है क्या रोल होगा? गैस द रोल। बट कांट यूज हिम विथ नाहिडा, दैट्स व्हाई आई एम सैड। दो टीम बनानी पड़ेगी आपको बेसिकली, तो दूसरी टीम में चल ही जाएगा वो। भाई ये क्या है? 16% क्रिट रेट, हेलो। किधर लेके जाऊं मैं ये? ब्रो व्हाट? ये पीस किधर लेके जाऊं भाई मैं? ऑफसेट भी किधर है? मेरे पास तो ऑफसेट भी नहीं है यार, फ्लावर का तो। I created another universe. भाई इसको ये वाला पीस दे दिया, मेरा क्रिट रेट आसमान में पहुंच जाएगा भाई। सिर्फ देखो एक बारी, 194.79। व्हाट भाई, अगर ये पीस किसी और में निकलता आया का के सिवा तो मैं खुश हो जाता, पर आया का को क्रिट रेट देके करूं क्या? आप F2P हो? यस। ऑफसेट संडास आर्टिफैक्ट फिट कर दे। नहीं यार, मेरे को लग रहा है जीवन में काम आएगा कभी Blade तो। embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. मेरा क्रिट रेट आसमान में पहुंच गया रे बाबा। नहीं आएगा काम, पक्की बात है। आ क्या? F2P में C2 नाहिडा, C2 नाहिडा नहीं है, C2 राइडन है। नाहिडा तो C0 है, C2 राइडन। मैंने बहुत सेव किया था इसके लिए, जस्ट सेइंग। उसकी वीडियो पड़ी होगी, आपको देखना हो तो। पुल करा था, उसकी हाईलाइट डाली थी मैंने। एज अ F2P आई हैव टू फ्लैक्स, C2 नाहिडा एंड C1 उताओ। देखता हूँ जाके, ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, देखना हो तो। क्या करना था मेरे को? ब्रेन लैग हो गया। पहले तो टीम चेंज करना पड़ेगा। हाइपर ब्लूम से पता नहीं क्या ही बना दिया था मेरी टीम Who's को our मैंने। target this time? May knowledge guide you. एंड हुताओ वे, या
4 महीने की थी शायद, हो सकता है, मैंने गिना नहीं था। एंड इसको वापस ये पकड़ाना पड़ेगा। एंड चलो यार करते हैं स्टोरी क्वेस्ट। हो गया ना मेरा सब काम आज का, एक सिर्फ पॉट में से लेना बाकी बस। Would you care to... पॉट में से ट्रांजिएंट रेजिन ले लेता हूँ। If you ever... और एक कंडेंस बना देता हूँ क्योंकि वो ना हो जाए, कैप ना हो जाए रात को। वीकली बॉसेस करना है फिर रात को। अबे यार गैस कर मेरे पास अभी कितने हीरोज वेट है, मेरे को क्या मालूम बे। हिंट बहुत ज्यादा, ठीक है मैं ऊपर या नीचे बोलता हूँ, मतलब तुम ऊपर या नीचे बोलो, मैं नंबर बोलता हूँ, ठीक है। ये गेम खेले बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा का मैं हिंट मारता हूँ। मैं हिंट मारता हूँ 700। कम है या ज्यादा? और बढ़ाओ, अच्छा 800। और अच्छा ठीक है 950। और भाई व्हाट, 1000 के भी ऊपर है, मैं नहीं मानता भाई। कब से सेव कर रहे हो बे भाई? और व्हाट, अभी तो ज्यादा ही दे देता हूँ 1500। इससे ज्यादा हुए तो भाई भाई मैं गैस नहीं कर रहा भाई, मैं छोड़ रहा हूँ फिर खेलना। भाई कैसे मिल जाता है सबको? मैं 73 विथ पे विश पे तो ले दे के नाहिदा निकली मेरी है यार मेरे भी यार कितना भाई, कितने विश पे मेरी अच्छी खासी थी। नहीं ये ज्यादा हो गया, ठीक है 1200, 1200, 1250 है ओ भाई। नाइस, क्या ही कर रहे हो भाई इतना ज्यादा सेव करके। मेरा लक पिछले 3 बैनर में अच्छा चला भाई, मेरे को नाहिडा अर्ली मिल गई, उसके बाद मैंने राइडन पे पुल गया था तो राइडन में C2 मिल गई, 3 राइडन मिल गई मेरे को। एक एक 50-50 लॉस भी हुआ था जिसमें जीन निकली थी शायद। और हुताओ में भी 50-50 लॉस हुआ था जिसमें डीलुक निकला। और उसके बाद एक पुल में 110 पुल में 2 हुताओ निकली। तो लक ऊपर नीचे चल रहा है, पहले नीचे जाता है फिर ऊपर ले जाता है मेरे को। मतलब कितनी विश लगी 3 राइडन के लिए, हाउ मैनी? अरे वो वीडियो में लिखा है मैंने कितनी विश थी, देखना जरा, रुको देखते हैं। टू 209 या ऐसा कुछ विश है। 10 में दो होता हूँ, नहीं 10 में नहीं, मतलब 50 में दो, 50 में 2 होता हूँ निकली थी, पर एक 10 पुल में 2 निकली थी, वो बात है, तो बोल सकते हो। पर टोटल 50 विश लगी थी मेरे को होता हूँ लेने के लिए। मैं देख के आया, ठीक है देखो देखो। डैम, हाँ तो निकल ही जाएगी ना वही तो। और उसमें से एक 50-50 लॉस हुआ था फिर, अगर तीनों 50-50 विन होती तो मेरे पास और एक एक और 5 स्टार के लिए विश बचती।
उतना विश कैसे जमा किया यार? बहुत सेव किया था उस टाइम पे, काफी सारे, लाइक कितने महीने सेव किया था मैंने? ज्यादा हो गए बे, 4 महीने भी नहीं, ज्यादा हो गए उससे भी ऊपर की चैट। मैं रोज रन कंडेंस लगा रहा था, ऐलान के बाद ही आज देखा बीसी 1250। नाइस रे। You two look familiar. आरव नाम है इसका। Are you friends of भाई ये भी Mahamatra इंडियन है। Sayo? I'm afraid he's out on a mission right now. But if you'd like, I can pass whatever message you might have on to him. भाई पूरा दिल जान लगा के सेव किया था राइडन के लिए तो, और भी कुछ लगाया था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 3 कैरेक्टर लेवल 90 कर दूंगा। मत करो, मैं तो बोलता हूँ, अगर जो आपका जो मेन डीपीएस है वही कैरेक्टर 90 करो, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। 80 करके छोड़ दो, वरना यूज मत करो। अगर फ्यूचर में आप कैरेक्टर्स पुल करने वाले हो अच्छे वाले तो, अगर नहीं करने वाले और सपोर्ट बिल्ड कर रहे हो तो कर सकते हो। Oh? If you don't mind, why don't you tell me about it या first? तो फिर ऐसे कैरेक्टर्स बिल्ड कर सकते हो 90 के, लाइक नाहिदा है, और क्या है, हुताओ है, और मतलब ऐसे जो 90 पे काम आते हैं, उनका कैरेक्टर लेवल चाहिए रहता है। आई थिंक हाइपर ब्लूम में भी चाहिए रहता है, हाइपर ब्लूम वाले कैरेक्टर भी 90 कर सकते हो। ये गान्यू ट्राई करो पुल करने की, मैं भी बोलता हूँ मत करो। Siraj. सिराज नाम है किसी का। Siraj. That मेरा name प्रोफाइल sounds देखना, देखता हूँ। familiar. Isn't he a Vahumana researcher? Vahumana researcher? Yes, one of their most गान्यू के लिए renowned, आपके in पास fact. बैनेट होना I believe he's चाहिए, as आपके daring पास as he is जोंगली intelligent. होना चाहिए यार, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स लगते हैं यार उसके लिए, सपोर्ट के लिए, तभी अच्छा डैमेज आएगा। उससे अच्छा आया का, अच्छा आया का पुल किया था क्या आपने? आया का अच्छी है। अरे बहुत सारे डीपीएस हो गए बे अभी तो, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी डीपीएस पुल कर सकते हो। There are rumors he'll become Vahumana's next sage. But please continue, good sir. मेरे सारे कैरेक्टर What about 90 लेवल के जो Siraj? यूज करता हूँ, ठीक है यार, वो तो मेरे भी नहीं है अभी तक। I want to report him for conducting a dangerous मेरे कितने experiment. कैरेक्टर्स 90 के पता है? एक काजुआ है 90 का, राइडन है, आया का है, और येलान है, बस। आई थिंक 4 ही कैरेक्टर 90 के मेरे। He kidnapped me, tied me up, and took me to that horrible cave. नहीं मिली आया का 50 विश। ओ सैच। आएंगे बे, अभी अभी तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स आएंगे, डोंट वरी, सेव करो। I ran as fast as I could, a little एक slower, and डीपीएस he would have निकालने का caught ट्राई me. करो, कोई भी अच्छा वाला, ठीक है? There's no rush. 2 टीम Please, बनानी है आपको, दो your time. मेनली 2 डीपीएस चुनो और उसके अराउंड टीम बिल्ड करो, सपोर्ट और वगैरह वगैरह, ठीक है? What kind of experiments was he conducting? Where is this cave? I don't remember. Huh? You can't remember? All I remember is Siraj walking towards me, and then my head started feeling weird. It's like a nightmare that I can't recall. I just know that that place is dangerous, and that they must be stopped. Oh, I heard they conduct business in the tavern. राइडन कब आएगी? राइडन का तो टाइम लगेगा, लग रहा है। Even if what you say is... But before that, I would like to administer the Matra lie detector test. काजुआ आ रहा है ना, काजुआ पुल कर सकते हो। काजुआ इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट। You think I'm lying? सपोर्ट बोल सकते हैं, बफर बोल सकते हैं, क्राउड कंट्रोल बोल सकते हैं। Please don't take it the wrong way. This is just standard protocol. Sorry, but can you two wait out here a little while? We'll be back soon. नाइडा के साथ काजुआ जमेगा? नहीं, नाइडा के साथ बिल्कुल नहीं जमेगा। मतलब जमेगा, पर उसके लिए आपको फिर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी लगा के हाइड्रो स्वॉल करना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा, पर दूसरी कोई भी टीम में काजुआ चल जाएगा। जोकर गेमिंग वेलकम टू स्ट्रीम। व्हाट्सएप। जोंगली कब आएगा? जोंगली का भी पता नहीं है यार। Let me bring you up to speed. 3.7 के बाद ही आएगा लग रहा है, 3.89 में आ जाएगा शायद। This indicates that what he said is highly credible. अभी कोई न्यूज आई नहीं है As such, जोंगली we've की। decided to launch an investigation based on the leads he provided. नहीं जमेगा, काजुआ डेंड्रोस्वल नहीं करता है। यस, काजुआ के लिए आपको फिर हाइपर ब्लूम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? आपको पहले डेंड्रो लगाना पड़ेगा, फिर पायरो सॉरी नहीं, पहले वाटर लगाना पड़ेगा, फिर मतलब हाइड्रोस्वॉल करना पड़ेगा, काजुआ से हाइड्रो की अल्ट मारनी पड़ेगी, फिर जाके डेंड्रो लगाना पड़ेगा। उस सब में बीटी हो जाएगी आपकी, तो वो टीम में तो नहीं चलेगा।
Per protocol, this matter was reported to acting Grand Sage Alhaitham. After hearing Ah, about it, ye he left a Alhaitham message is for your Mahamath dude. Sino and then asked to join the investigation. जोंगली तो यार मेरे को भी चाहिए, मैं भी सेव कर रहा हूँ जोंगली के लिए। मैं तो याए नाइडा कोकोमी काजुआ का टीम सोच रहा। कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यूजेबल नहीं है, पर उसके लिए वही है, हाइड्रोसोल करना पड़ता है या तो फिर इलेक्ट्रोसोल करना पड़ता है, पर हाइड्रोस ज्यादा काम आता है इलेक्ट्रो से लग रहा है। मजा आएगा इस टीम में। ठीक है भाई। आशीष भाई, सुअजीत की बात मत सुनना, ठीक है? आपको पहले थोड़ा सा गेम सीखना पड़ेगा, आप अगर न्यू हो तो थोड़ा सा रिएक्शन और वो सब के बारे में, टीम कॉम्स के बारे में। तो ये तो सिर्फ ये जो अभी मैं वो डोमेन में खेला वो टीम भी कॉपी मत करना, ये जो बोल रहा है ये टीम भी कॉपी मत करना, ये सब सिर्फ ट्रायल बेस्ड टीम है। हाइड्रो ज्यादा काम आएगा इलेक्ट्रो से, हाँ वही तो बोल रहा हूँ भाई। You're overthinking things. My interest was piqued is all. Really? I'm unsurprised you have this much free time. In that case, let's join in as well, shall we, Traveler? It's already against protocol for acting Grand Sage Alhaitham to participate in this investigation. As for you two, oh, never mind. After all, you were the ones who brought Ilyas here. I'll allow you to accompany us, but you have to promise to keep everything confidential. ठीक है भाई। Our lips are sealed. All right, in that case, I'll fill you in on आले what तम we इतना know बज so नहीं रहा, far. ये क्यों बज रहा है इतना? Ilyas claimed that Siraj will be conducting some business with a Kasharawa researcher. ये सब at the टीम tavern. बस मजाक के लिए, This is डोंट one of बिल्ड his दिस few टीम clear लाइक memories. डोंट बिल्ड Seems टीम्स he's लाइक दिस। stumbled- Incidentally, Siraj isn't at the academia right now. He applied for long-term off-site research 1 month ago. It's close to the time that Ilyas had given. So we've decided to head to the tavern and investigate any suspicious persons. That's right. Arav. और अभी तो फोन्टेन भी आ जाएगा तो उसके भी अलग अलग कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है? 4.2 में। Oh, come on! We already said that we're coming! टाइम है वैसे अभी तो। तेरी टीम देखनी थी ना मेरे को। ट्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। फ्लाई, फ्लाई कौन है? जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हाँ ये कौन है भाई? ये फ्लाई। किधर है? ये रही। भैंस की आंख, सब कैरेक्टर्स 90 करके रखे इसने। 1 2 3 4 5 6 7, मेरे से भी ज्यादा है। मेरे कैरेक्टर दिखाओ कितने? 1 2 3 4 5। अच्छा आयका को भूल गया था मैं। किसको भूल गया था? किसी को नहीं भूला था। 5 कैरेक्टर 90 के बस। सिंचू भी है तो 8 है। वाह ठीक है भाई, पर मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही बिल्ड करके रख दिए भाई तभी। तेरे से मीको रिव्यू नहीं करवाया, कर दियो जरा। हाँ क्या राइडन को भूल गया? ओ माय गॉड, माफ करो यार राइडन। 1.8 के अटैक, 63 245, 138 एनर्जी रिचार्ज। भाई क्या मस्त रेशियो है बे। 63 245, ओ माय गॉड। विटसी तार 5, 2 पीस शिमनावा, 2 पीस थंडरिंग फ्यूरी, 26 and 6, 13 9 11 एनर्जी रिचार्ज प्लस अटैक परसेंटेज, 21 9। ओके 17 3 9 एनर्जी रिचार्ज प्लस अटैक परसेंटेज। ठीक है भैया, अभी ठीक हो गया बे तेरा ये, अभी अच्छा हो गया ये वाला। एंड 10% क्रिट रेट, 11% एनर्जी रिचार्ज एंड क्रिट डैमेज। जॉर्ड मीको बे, जॉर्ड जॉर्ड जॉर्ड। गो टू द टैवन। अच्छा मेरे को टैवन जाना है। टैवन जाते बे, उसमें क्या है? We're here acting Grand Sage Alhaitham. What's our next course of action? Acting Grand Sage Alhaitham? Looks like you haven't read any memos lately. The new Academia decree clearly states that even a sage doesn't have the authority to interfere with the Matra's actions during an ongoing investigation. If your superior were here, he wouldn't be asking me what to do. Instead, he'd be telling me to stay out of the way. You're right. Understood. Okay. Then please wait here as we lock down the perimeter and search for suspicious persons.
अभी तो आर्टिफैक्ट सेव करूंगा। सुनने में आ रहा 4.0 में एम्ब्लेम और शिमिनावा आ रहे। 4.0 में एम्ब्लेम और शिमिनावा आ रहे है जी। है जी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बॉक्स में क्या बात कर रहे हो? ये तो मेरी काम की चीज है बे। Ilyas, please stay here. Acting Grand Sage स्कैम Alhaitham, बॉक्स में। I'll have to trouble you with the protection of our primary witness. अरे मैंने पूरी हुताओ स्ट्रॉन्ग बॉक्स से बिल्ड कर दी ना। मतलब ये वो अलग बात है कि उतनी अच्छी बिल्ड नहीं है अभी तक, पर हाँ काम चलाओ बिल्ड है। सिर्फ एक एलिमेंटल मास्टरी वाला सैंड चाहिए मेरे को, अच्छा क्रिट डैमेज क्रिट रेट वाला, जो नहीं मिला अभी तक। बाकी सब काम चलाऊ हो गया। एक पायरो डैमेज बोनस चाहिए अच्छा वाला। दोनों में से कोई एक ऑन पीस आ जाए, ऑन सेट मतलब, तो काम हो जाएगा मेरा। Casually ignoring people just like he did back at Aro Village. मैं अभी ये कर रहा हूँ कि मैं ब्लिजर्ड फार्म कर रहा हूँ और उसके जो बेकार के आर्टिफैक्ट है वो हुताओ के स्ट्रॉन्ग बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये कर रहा हूँ मैं भी। Answering a simplistic question only enables the questioner. Besides, I need him to understand my position clearly. What do you mean? Arav has just as many doubts about my coming along as you do. But unlike you two, he's making this matter more complicated than it is, with his considerations like the acting Grand Sage is trying to seize the Matra's powers. That question is obviously bait. The Matra were once under the influence of the sages, and so were often subject to these bureaucratic traps. The test was strictly unnecessary, though. I hope that our exchange will assure him that I won't interfere with their work this time. Why is this so complicated? This is why I was against becoming the acting Grand Sage from the very इसको तो first. बनना ही नहीं था, वही बात है। Titles and rank inevitably make a lot of things more troublesome than usual. Excuse me, acting Grand Sage Alhaitham. I've had a question on my mind, and I need to know the answer no matter what. Have we met before? No. No. I have no recollection of ever meeting you. मुंह पे मना कर दिया। बाइजू कला आ रहा है नल्ला। अरे अच्छा ही लग रहा है कैरेक्टर, तो पता नहीं, देखना पड़ेगा। I thought so too. शील्डर है, हीलर है, सब कुछ है भाई वो। Your caliber. मैंने देखा नहीं अभी उसका गेम प्ले और वो सब वीडियो ये लोग डाल रहे हैं गेंशिन वाले, पर हाँ उतना थोड़ा सा देखा था। टट्टा कैरेक्टर है, मत तो बोलो यार, 5 स्टार बेचारा। Then why did you ask? Well, for some reason I felt a sense of आपकी एज कितनी है? सनातनी टाइगर ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम। व्हाट्सएप। मेरी एज 99। आपको कितनी लगती है? गेस करो। A misperception, perhaps. Or Acting Grand Sage Alhaitham, we've 5 apprehended स्टार the तो suspect. चीची भी है, बात तो है यार। सबसे बेकार 5 स्टार आया था चीची के भी अलावा। डिया सबसे बेकार 5 स्टार है, आई थिंक सो। यार डिया को बफ करने की जरूरत है इन लोगों को, बहुत ही बेकार है। Siraj? No, it's the Ksharawar researcher who has dealings with him. His name is Narendra. नरेंद्र नाम है भाई इसका, नरेंद्र। लॉल। डिया एक्सिस्ट आना। Acting Sage Alhaitham. Wait, can someone please explain what's going on? I admit that I did steal some mechanical components from the lab and sell them, but does something like that really warrant the personal interest of the acting Grand Sage? What have I gotten myself into? डर गया ये तो आलेतम को देख के। Please, I promise that this won't ever happen again. I would like to ask him a few questions. Of course. Do you know Siraj? Yeah, that's the name of my buyer. He asked to make the transaction at the tavern, but he never showed up. What were the 18 details of लगती this है, ठीक है? transaction? He's doing some kind of experiment that seems to require many power generators and electrical components that can only जी be found फटे by तो फटे, projects. नवा भी ना कटे, आना भाई। He contacted me in private and said that he'd pay a नरेंद्र large नाम है sum ना? of mora if I was willing to put some aside 20 for लगती है, ठीक है। under the pretense of them being defective parts. We had originally agreed to meet at the tavern earlier today to do the trade. I sure didn't expect to get stood up or run into you all. Perhaps Siraj was aware that Ilyas might leak information, so he intentionally didn't show up. Whatever the case, it seems that this lead ends here. The good news is, regardless of what Siraj was planning, his progress will now be severely hindered by a lack of power generators and electrical components. We still have time to conduct our आप कहाँ रहते investigation. हो? गुजरात में। Do you have any more questions for the suspect? No, he's all yours. But I'd like to borrow Ilyas for a while.
That's fine. We conducted a comprehensive lie detection. कोई चीज exam. बोरो करने It के लिए showed बोल रहा है, that ऐसे he has a बोरो करने के genuine लिए case of इलियास amnesia. चाहिए मेरे को थोड़े टाइम के We're लिए, not दे दे planning मेरे to को. pursue any further breakthroughs on that front. However, I am curious. What do you need him for exactly? I've read some papers regarding amnesia, and I'd like to try restoring his memories. I see. We'll be returning to the academia then. I'll leave Ilyas in your care. गुजरात में ही Follow me. ढोकला मेन डिश है ना. हाँ, ढोकला खाते हैं गुजरात में, बहुत खाते बे. मतलब बहुत चीजें ऐसी जो गुजरात में फेमस है. ढोकला, हांडवा, खाखरा. वो थ्री इडियट्स का डायलॉग है ना. ए यार लेतिम, क्या बात है बे, मेरे को भी बता. Siraj didn't show up at the tavern, and Narendra didn't give us any leads. Ugh, that means we're stuck. Alhaitham, are you serious about seeing things through? Paimon's pretty surprised that you're this interested in the case. टेस्ट में कैसा होगा है? अच्छा होता है वैसे, क्या ही बोलूं अभी. एक बार ट्राई करने जैसा होता है, अगर नहीं I खाया thought है you would तो. have guessed the reason by now. Huh? Paimon has no clue. Do you know Hey, सीराज? Yes, we were classmates. अच्छा, क्लासमेट थे ये You लोग. asked to come along when Arav briefed you on the situation. So you're not here because you're interested in the case itself, but because you know the suspect? You couldn't be further from the truth. But I wasn't expecting much from you to begin with. For the time being, all you need to know is that we were once classmates. कल I तेरे became घर a आ रहा, student साथ में afterwards खाएंगे. while he ठीक है भाई, continued आ his जाओ. academic endeavors. He submitted a thesis 1 year ago, and the Grand Sage at the time asked for my opinion. I did not approve of it because it committed one of the 6 cardinal sins by touching upon human evolution. From violating matters regarding human evolution to attempting the forbidden and fearing none, the 6 cardinal sins are the origin of all evil in this world. ढोकला They are पार्टी also what अवार्ड. the ए sages बीटीएस used भाई, as a वेलकम टू स्ट्रीम. reference when व्हाट्सएप, क्या हाल formulating or चाल? amending the rules of the academia. My opinion was that Siraj's research was both overly naive and in violation of various core principles. The Grand Sage took some of my suggestions on board and ultimately decided to reject the application. So that's why he's buying energy sources and अबे electrical नाइट बोट अभी उठा क्या components. भाई? नाइट बोट भी सो गया था क्या? He's most likely नाइट बोट trying to बोलता है ये सुबह circumvent तो the स्ट्रीम rules करता and नहीं, तो मैं conduct सुबह his सो जाता experiment हूँ. in secret. फिर बोला ओ माय गॉड ये तो स्ट्रीम कर रहा है, जगना पड़ेगा. ढोकला का नाम लिया, बीटीएस भाई आ गए. वाह. ए टाइटन, यो वेलकम टू स्ट्रीम. व्हाट्सएप, क्या हाल चाल? यू. That sounds super suspicious. Oh, we gotta stop him. जी, बीटीएस भाई भी लाइक. Try to remember things मैं ढोकला हूँ क्या? Maybe something new will pop up. I'm sorry, but I've already tried many times. And no matter how hard I try, it feels like everything in my mind is shrouded in a thick mist. ए मिस्ट से याद आया, मिस्ट हाशिरा का एक्शन देखा क्या किसी ने भाई? मतलब इतना कुछ दिखाया नहीं अभी तक, वो बात अलग है. However, these memories aren't truly lost, but है जी, merely नहीं हाँ जी. sealed away. ये अच्छा था. They can be restored with the appropriate stimulus. Now, try to recall things you care about. They don't need to be related to this case. Well, actually, I feel like I've forgotten more than Muichiro just the memories Tokito, of the yeah. time I was kidnapped and experimented on. The kind of person I am, the things I've done, I can remember some things, but I can't recall some others no matter how hard I try. But अबे ये चेयर पे बैठ बैठ के मेरी पीठ दुख गई है रे, कुछ करना I पड़ेगा. have to do no matter what. Do tell. The first is to get my paycheck from the academia and give it to my younger sister. वो ऑफिस as चेयर I'm जैसी done with चेयर it. लानी पड़ेगी भाई, I'm शांति से not बैठने sure about the details, बैठने के लिए. but it seems that I would send money to my younger sister every month to pay for family मुझे तो expenses. मिस्तुरी का एक्शन देखना है. ठीक है भाई. What's the second thing? I can't remember. Sorry, there's just so much I can't recall. Not unexpected. अबे कोई स्पॉइलर मत देना, बीटीएस भाई ने नहीं देखा है डीमन स्लेयर. वो वेट कर रहे हैं कि पूरी सीजन आ जाए उसके बाद देखेंगे. ठीक है भाई. We'll do everything we can to help you regain your memories. Losing your memories must be really वेट फॉर painful. योरीची. But don't you ओके, worry. We'll help you get them all back. योरीची इज डेड. सो वाह Thank you भाई. so much. ए स्पॉइलर मत देना, This स्पॉइलर feeling मत देना, is बता रहा हूँ, more अभी than से just बता रहा हूँ. pain. स्पॉइलर I मत don't देना, know how to मेहरबानी करके describe भाई. it. I have so few memories that I don't even have a clear idea of who I am.
and my head's always ringing. It feels like I could faint at any moment. But amidst all that, it also feels like I've been set free somehow. Nevertheless, I have you all to thank for bringing me what clarity I do have right now. पता है लास्ट में क्या होगा. ठीक है भाई, ये कर लो. Part-time at a place in the academia called मुजान मर जाएगा. Operation Center. ये कर लो That's also भाई. where I got my monthly paycheck. I see. In that case, let's go and find whoever's in charge there. तो द रिसर्च प्रिपरेशन सेंटर किधर है भाई? ये किधर है? आई रीड द मांगा. ठीक है भाई, रीड करो पर हमें मत बताओ. ठीक है. हम बेचारे एनीमे वाले, हमें मत बताओ. जीनात. अबे सुमेरु में मस्त मस्त नाम वाले इंडियन नाम जैसे दिखते भाई सब लोग. अरे वो रेंचो और पिया 60 में. हाँ ना भाई, भाई 3 इडियट्स आ गए थे भाई, बता रहा हूँ. अबे यहाँ पे चेस्ट तो ऐसी स्मेल आ रही मेरे को. है क्या? नहीं है क्या? नेवर माइंड. स्मेल गलत भी हो सकती है कई कई बार. बीटीएस भाई भी लाइक भाग जाता हूँ, नहीं तो स्पॉइलर में जी फाड़ देंगे. सच में भाग जाता हूँ. स्मेल. अबे यार तुम लोग वर्ड को क्यों पकड़ते हो यार? इमोशंस को पकड़ो यार, वर्ड को मत पकड़ो. बाय. अबे नहीं देंगे स्पॉइलर यार, मेरे को विश्वास है मेरे व्यूअर्स पे. डोंट वरी. नाइट बट तू भी चला जा. स्मेल तो वो भी करती थी, मत करो यार. ये मुकेश भाई, मकेश भाई. अबे मकेश नाम नहीं होता यार, मुकेश नाम होता है. ये क्या बात हो गई भाई? अभी नाम रखना ही था तो अच्छे से रख देते यार ये लोग. छी भाई. Recent research expenses have decreased आज quite a bit डे compared to ऑफ past है figures. बैंक वालों की तरह. ये Yes, though that is primarily because there are fewer scholars with research needs. But that can be a rather convoluted topic. Might I ask why you are here today? I believe you know this individual. His name is Ilyas. He worked part-time here, and he's here for his paycheck. Oh, yes, of course. Though, Ilyas, where have you been these past few days? बीटीएस भाई बैंक में जॉब करते नहीं. अरे उनकी इंटर्नशिप में डे ऑफ होगा ऐसा बोल रहे. I'm sorry, something unexpected came up. हालात देख लो भाई. बीटीएस भाई भी लाइक हाँ वही वही. Is there anything I can do to make up for it? The other researchers have more or less finished your share of the work. However, there is one thing. स्पॉइलर था वो भी देती थी, स्पॉइल करके चली गई. हाँ क्या? You were in charge of following up स्पॉइल on तो his उसने मेरी off-site जिंदगी की research थी ड्यूड. application. मत करो यार. He retracted उधर his से पैसे भी application a चुरा few लाता days हूँ ago रोज. हाँ and क्या बीटीएस canceled भाई? his off-site project. कुछ He's बैंक्स the में मंडे 12th ऑफ person होता to है. retract कौन सी a बैंक से research भाई ऐसी? application this month. I'd like you to ask him why he did that. Chandra is probably बीटीएस भाई having हल्का सा एक coffee at वेलकिन this दे देना. hour, हाँ ना so you can find him at the cafe. बीटीएस भाई मेरे को भी. Understood. Then, about my paycheck. I'll pay you in full once you return. हाँ. Make sure you don't disappear without मुकेश भाई है saying भाई, anything ऐसे again. नहीं देंगे. Consider it to your colleagues and give them some forewarning at least. Is this acceptable, acting Grand Sage Alhaitham? I have no objections. मेरे को सालों पुरानी मेमोरीज है जी.
पर मैंने नया पटा ली, ठीक है भाई, नई पटा ली। नई क्या होता है बे? नई पुरानी? हेलो, व्हाट इज दिस लैंग्वेज ड्यूड? अबे यार क्या बात कर रहे हो, इधर से नहीं चढ़ सकते? क्यों भाई, मैं तो चढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चेस्ट नहीं रखी इन लोगों ने कोई भी, क्या बात कर रहे हो भाई? अपॉर्चुनिटी मिस्ड। Why is my Hindi so bad? वैसे विंगमैन गन कब यूज करेगा है जी? બદલાયો જમાનો, હું તો નવી ફેશન લાયો, જૂનીને હટાવીને તો નવો માં પટાયો। ठीक है बीटीएस भाई, ठीक है भाई, प्लांट करेंगे, विंगमैन कवर देगा। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं सुवजीत भाई, समझ रहा हूँ। वो बात अलग है कि मैंने इग्नोर मारा है, पर फिर भी समझ रहा हूँ। ये वाला तिमली नहीं सुना क्या? भाई ये तो पहली बार सुना यार, सच बता रहा हूँ। Elias, long time no see. What can I do for you? I heard that you canceled your research project, so I'm just here to ask you why. Oh, that. It's really nothing special. I just don't feel like going anymore. I'm not the only one who canceled, right? I mean, people have had no motivation to conduct research lately, haven't they? No motivation to conduct research? आज जाके सुना पहले। Yeah. GJ20 तिमली, ठीक है भाई। Who might you be? You look sort of familiar. वाह भाई। No, don't mind me. Please, continue. मेरे को तुम कहीं Well, पे with देखेला the लग death of रहा the है। sages not long ago, क्या बात कर many रहे of हो? the projects मैंने that तो they तेरे को led नहीं were देखा put पर। on hold while they were being investigated. With the situation being so volatile, people are picking up random things to do to kill time. No one wants to risk starting any new research until it's clear how things will pan out in the future. When you say how things will pan out, you actually mean what the new sages would have interest in, right? Wow, talk about blunt. But that isn't the only reason for the lack of motivation to start new research. So what are the other ए reasons? बिल्ली की आवाज आई बे कहीं से, मियाओ करके। Well, because the Akasha terminal shut down. I'm sure you're all aware that we require all kinds of knowledge to perform any of the research we do. भाई तो क्या Back सब then, the नॉलेज Akasha आकाशा ही would मिलेगी respond भाई? to any of our requests for the knowledge we needed. It was खुद beyond ढूंढो भाई, convenient. मेहनत करो थोड़ी, We didn't बुक्स have में to सब spend an नॉलेज होती है extended भाई। amount of time studying, so we were able to immediately run various tests and experiments. I see. You get it, right? After having had a taste of something so amazing, who can be bothered to manually sift through data and files ever again? There are only a handful of people at चंद्रा the मेरे दोस्त के academia who are पापा का starting new नाम है, projects ठीक है or भाई। performing research. Most people are like me, एल का सिटी ऑफ waiting for a विजडम है जी। recognized researcher to start a project before immediately applying to join. Although our names will be further down in the paper, we'll have a much easier time. We don't have to do most of the mental heavy lifting. बात तो है All we वैसे। have to do is focus on our assigned tasks. ये लोग सब आकाशा से बंधे हुए थे भाई। ए इसको क्या हो रहा है मेरे भाई को? मेरे भाई को कुछ हो रहा है रे बाबा, तो हो रहा है। Ilias, what's wrong? मेरे भाई को कुछ हो रहा है रे It बाबा। hurts. I remember now. I remember what Siraj said to me as he approached. You will become Siraj number 36. Fuse yourself with a consciousness under my control. Think only in accordance with a set module. Like a worker bee in a beehive. ओ भाई। Paimon doesn't get it. What does that even mean? It's what Siraj was researching and the topic of the thesis he had submitted. Collective consciousness and the path of evolution. कलेक्टिव Siraj कॉन्शियसनेस। believed that by achieving 3 objectives, he could create a collective consciousness in human society and drive humans toward their ultimate evolution.
First, he would rank test subjects in descending order of ability, with number 1 serving as the Overmind. This Overmind would then divide tasks into numerous modules and delegate them to the collective's members based on their assigned number. Lastly, members would share their memories and emotions to facilitate the rapid exchange of information within the collective. Paimon still doesn't get it. What's the point of all that? Think of it as linking many minds together and tailoring a given mind's assigned work based on its compatibility. Eventually, everyone's minds will be consolidated into a new form of existence that is both an individual and an organization. Suraj believes this collective consciousness is superior to individual humans. Whoa. Squishing a whole bunch of people together? Paimon thinks that sounds horrible. It's just as Alhaitham said. Siraj gave all the test subjects different numbers. Bigger numbers meant you had a lower rank, so your assigned tasks were less complex, such as being responsible for everyone's basic needs. Smaller numbers were ranked वाह higher, भाई so कंट्रोल you कर could रहा है ये gain तो more सबको भाई complex ठीक है भाई ये assignments कर like लो planning for the future. मेरे को क्या Siraj referred to me as number 36, and I think that was a low-ranking number. I also recall that Siraj said his plan was proceeding very quickly, and that the hive would soon be complete. Oh no, then we gotta hurry. We have to stop him before it's complete. I tried my best, but that's all I can remember. I still can't recall where the cave is. I'm really sorry. कोई बात नहीं मेरे भाई Take your time. You'll eventually remember it all. However, something doesn't seem right. Some details don't add up. What's off? You were only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. I'm not sure what Siraj's numbering system is based on. Anyway, we're done here. Let's go. let's go Please, wait. चंद्रा भी लाइक रुको यार मेरे से I मिलने heard आए you थे all तुम talking लोग तो about इधर Siraj जा रहे just हो now. Are you looking for him? तेरे को पता है Do you know something? तो बता भाई कब से क्या सुन रहा है Siraj is pretty popular as of late. I heard he's gained recognition from a lot of well-known researchers. Supposedly, he's a strong contender for being one of the next sages. There are many who would give up everything to be a part of his research team. I'm nothing special, though, so I doubt I'd get the opportunity. That said, I do know a researcher who received an invitation from Siraj but declined it. Her name is Janaki. जानकी If you're interested, you can try to find तेरी her. बहन की She's usually पूरी reading at the क्वेस्ट इंडियन pavilion से at भरी dawn. हुई है भाई पूरी क्वेस्ट इंडियन से भरी हुई है यार मैं आता हूँ वॉशरूम जाके बहुत तेज की लगी भाई रुको Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. आ गया आ गया आ गया Silly churl. लुक फॉर जानकी जानकी को मिलना पड़ेगा रे बाबा किधर है अबे फिर से नीचे जाना पड़ेगा यार अच्छा इतनी भी नीचे नहीं थी इधर है ये तो ए जानकी क्या तेरे को पता है सिराज किधर है We'd like to ask you a couple of things about Siraj. Ilyas? अबे अबे ये क्या आवाज Do है you know me? I'm sorry, but I don't recognize you. Are you playing dumb with me? 3.6 वाला शोर्ट्स वाला No, I'm क्वेस्ट not. किया I कौन actually सा वाला have amnesia, so I've lost a lot of my memories. And?
Are you trying to say that I should forgive you just because you've forgotten what you've done? अबे अबे Or are you using the acting आंटी तो grand भाई फॉर्म sage में as है। backup to settle things with me? The two biggest loners teaming up. What a terrible 3.6 का वर्ल्ड क्वेस्ट नहीं किया। वर्ल्ड There क्वेस्ट seems to नहीं be किया a भाई। dispute between the two of you, but I have no interest in that. पक्की बात है। I heard that Siraj once invited you to join his project. Alhaitham Is that बिल्लाई true? तुम दोनों के बीच के झगड़े में So, मेरे को what मत if it घसीटो तुम is? लोग। Siraj did extend an invitation to me, and I was also interested in his project. I think it was about भाई क्या collective एटीट्यूड है आंटी का? consciousness or something. मतलब Anyway, सामने he said that I एक्टिंग could be number ग्रांड सेज खड़ा है, 45. I फिर भी refused बोल रही है because I thought that एकदम rank was too एटीट्यूड low. से। No one wants to be placed at the bottom. टट्टे कर दे, Certainly not मस्त है, me. करते हैं यार, Ilias is बारी number बारी से सब 36, करेंगे। and Janaki was supposed to be number 45. Ugh. Just how many people did Siraj have his eyes on? Tell me, did Siraj tell you how he assigned numbers? Yeah. Remember how the sages took advantage of the Akasha and extracted Yana energy from our heads back then? They left a document that records the amount of Yana energy that the Akasha had extracted from each person. I don't know how Siraj got his hands on that document, but he used it as the basis for his numbering system. I see. He believes that this data can be used to evaluate a person's computing power. Is it true though? Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. पक्की बात है। At most, jnana energy can only be seen as representing a portion of a person's abilities. Humans are complicated beings, so it is impossible to evaluate them using a single criterion. See? I knew I couldn't have only been ranked as 45. What else do you know about Siraj? That's it. He came to me, I refused, and that was the end of it. Is there anything else you needed? If not, I'm out of here. I've had enough of this eyesore. Please wait. I still want to know what I did in the past. बेचारा मेरा You भाई। really forgot. I swear, I don't remember anything. Paimon can vouch for him. The mantra also said that he truly lost his memories. I see. You know what? It's better this way. I get angry just thinking about it, so I really don't have the patience to fill you in. All you need to know is that you got a lot of people in trouble back then, including me. That's all I have to say. क्या किया मेरे भाई ने ऐसा? मेरे को भी जानने का अभी तो उत्सुकता हो रही है भाई। And she's gone. She doesn't seem to like you very much. Do you really not remember anything? I really don't. अभी But फिर after से she दुख said दुख that, ना हो जाए इसके I've माथे had में। this heavy feeling in my chest. I guess I did something really horrible. Do you want to remember? Huh? Even though you're a witness against Siraj in this case, you've also lost your memory. No one can force you to remember if you don't want to. Even if you manage to remember, all you would need to do is feign ignorance and tell us that you tried the best you could, but to no avail. I'm not sure what to do. Like I said before, for some reason I felt a sense of freedom when I realized I had lost my memories. But I feel like I shouldn't be allowed to go free so easily. I still want to remember everything. What should I do? I can look up your file. Something that caused trouble for a lot of people in the past must be on file somewhere. Would you like me to look into it? Yes, please. All right. Then let's return to the House of Dana. We've spent enough time here, and you should go and get your paycheck. Okay. अबे अबे चढ़ क्यों गई यहाँ पे? ए आर्मिन नाम है इसका। अरीना और आर्मिन। आर्याना नाम होता तो अच्छा रहता। अरीना नाम क्यों रखा है इसका? With the wind. मेरे को क्या यार, को जो नाम पसंद आया रख दिया।
Let's split up for now. Ilyas, you go and deal with that. The rest of you, come to the archives with me. We'll meet back here later and then head over to Gandharvaville. Okay. Thank you all so much. Relax, Ilyas. Being nervous accomplishes nothing. That's true. I'm ready. No matter what I've done, I'm ready to face it. ये मेरा भाई I'll also try चौड़. my best to remember anything else related to Siraj. We'll put an end to all of this. I'm holding you to that. See you later. क्या हिम्मत है मेरे भाई की चौड़. किधर जाना है मेरे को? Right to the elevator. अच्छा ठीक है यार. Go up. ये क्या लिफ्ट है बे. मजा आ गया देख के. Toodaloo. Doo-doo-doo. New job. कौन है ये? पना. Hey, Alhaitham. Okay. The important files from the last few years should all be here. बैठ गया भाई ये तो. भाई अब मेरे को करना पड़ेगा ये सब. खुद तो बैठ गया भाई बुक खोल के. About the ghost of paradise DI. There are witness. अब पढ़ने भी नहीं दिया. There are witnesses that said there is a mysterious shadow wandering around the paradise DI at night. The investigation found nothing suspicious and case was closed. ठीक है. The Tavshi Darshan has also had an abundance of weirdos. Recently, there is a new rumor that the student has the ability to write the heaven sent thesis. The circumstances are still under investigation. About the co-ops of 30 application fee. There are many vacancies for sages, and the number of suspicious people spreading various news in Sumeru city has increased significantly recently. The co-ops of 30 are looking to recruit for surveillance to ensure the city's peace and stability. What's wrong? Nothing. Anyway, I found Ilyas's file. Let's meet downstairs. भाई तो मेरे को इतना सब क्यों पढ़वाया तुम लोगों ने? हाँ What have I done? This file indicates that you were once commended by the academia for your courage and sense of justice. You were considered a hero. Huh? हैं? मैं हीरो? Yes. Your ये कब instructor से was हो गया engaged बोल in रहा है? academic fraud, and you were the one who reported him. Your report was found to be true after a series of investigations, and your instructor was brought to justice by the Matra. This incident caused quite the commotion, and the academia sent you a commendation. Ouch! मेरे भाई को फिर से लगा. What is it? Are any memories coming back to you? No, it's just... my head feels like it's being ripped apart again. It hurts. Did I seriously do that? Then why? Let's put this matter aside for now. It isn't directly related to Siraj, so there's no need to push yourself over it. I'm sorry. That should have been something good to hear, but my body is instinctively rejecting it. I feel like I'll black out if I try to remember. Take it slow. Recovering memories is no easy task, especially when it involves memories that you don't want to remember. Just do what you think is right. Thank you. I'm not sure how you're so calm and composed all the time, but it does make me feel more confident about the situation I'm in. Let's head to Gandharvaville and deliver Ilyas's paycheck to his sister. Come on! गंधारविल जाना पड़ेगा अभी. किधर से जा? इधर से जा, इधर से जा, इधर से जाता हूँ.
यहाँ पे तो ताइनारी होगा ना गंधर्व व्हील में, तो हो सकता है. We should be close. Let me think. It should be this way. Ilias, what are you doing back here? Aliasa. Ilias or Aliasa. Dad, it's nothing. Oh. I was just wondering how everyone was doing. इसके पापा है ये तो. You sure everything's okay? अशेरा. Did they bully you again? ये इसकी मम्मी है. It's all right. You can tell us. Ouch! मेरे भाई को फिर से लगा. Ilias, what's wrong? I'm fine. Just a minor headache. I haven't been getting much rest lately. Back then, I told you not to be a hero. Look how things turned out. I can't भाई imagine इसने if things अच्छा are काम going किया for you at the बेचारे ने. academia. We've even been receiving threat letters. एकेडेमिया You में भी don't have कोई to force इम्पोस्टर yourself to एकेडेमिया stay में ही है at भाई, पक्की academia. बात. You can always come back home. I'm all right. I just need a little rest. Ilias doesn't seem like he wants them to know that he has amnesia. He doesn't want his family to worry. Hey! That's enough, you two. Ilias isn't feeling well. You can Isabel. keep napping him once we get home. Ilias, ये इसकी let's बहन है? find somewhere to talk. ये इसकी गर्लफ्रेंड है? सिस्टर है, अच्छा. बहन ही है. So, how's your headache? It's much better now. Oh, here. It's this month's paycheck. How's everything at home? Same old, बेचारा same old. मेरा भाई तो It's just that पैसे भी everyone's इसको दे worried दिए. about you. Don't mind their nagging. Deep down, they know that you did the right thing. It's just that after hearing a lot of bad rumors about you and seeing all the threatening letters, well, they're mom and dad. Maybe they just want you to conform a bit more. Conform. Yeah. You don't remember? After the incident, you... अबे इंसिडेंट की बात करते हो, इसको What's कुछ wrong? होता है, कुछ तो हुआ है बे. Oh, I see. I remember now. Don't worry. I remember now. ठीक है, हमें भी बता भाई. You're acting a little weird today, you know? Anyway, I understand your decision. But Mom, Dad, and I just want you to be happy. I don't care if you're a hero or not. I just want you to enjoy life and relax more. Your understanding is a great comfort to him. Is it? That's good. Are you a friend of his? इसको नहीं पता भाई ये कौन है. More so these two. My name is Alhaitham, and this is the Traveler in Paimon. Oh, that rings a bell. At any rate, I feel more at ease knowing that my brother has friends. Would you like to join us for dinner? I just happened to buy some extra food. Sorry, but I still have things I need to take care of. Well, that's a shame. Okay, I'll get going then. भाई तू लड़की क्यों नहीं है? मास्टर वेलकम बैक. व्हाट्सएप यार, क्या ही करूं यार. पास करो Don't यार. worry. I won't do anything to make you guys worry again. You remember now? यार हमें भी बता यार, क्या रिमेम्बर किया तूने? Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad person. है जी. Is that your way of conveying gratitude? हाँ ना भाई. My apologies, but I meant every word. Remember when I asked at the tavern if we had ever met? I said that there was a sense of familiarity, but लड़की का लोगो लगा के लड़का निकला. अबे अबे यार क्यूट लोगो है यार, ऐसा मत बोलो यार. Yeah, but having spent some time with you, I realized that you're not someone I dislike to that extent. Strange, isn't it? Why did I have those thoughts at that time? My strength is that I don't care about what others think. If you could also develop this quality, then you won't be as bothered by complicated social relationships. It'd be great if I could think like you. But first things first. I remember where Siraj's cave is now. I'll take you there. चलो चलो. सिराज से निपटना पड़ेगा अभी, लग रहा है. Paimon remembers that you said there are two things that you had to do. We've only checked off one, right? What about the other one? Are we not going to do that first? There are more important things at hand. We have to stop Siraj before he completes his collective consciousness, or it'll be too late. You're right. Let's head out.
वही तो भाई, जो पहले बोलने के लिए बोल रहा है वो करना भाई, पॉइमन भी अलग ही है भाई। भाई तू पहला बात बोल दिया वो तो ठीक है, पर जो दूसरा बात बोला था वो नहीं करना है क्या? मैं अरे भाई जो पहला बोला वो तो कर, या दूसरा भाई करेंगे बाद में भाई। ठीक है यार पॉइमन यार, ये कर ले यार तू भी। वाह क्या जगह है। किधर है भाई इसकी केव? बात कर रही हो इधर नीचे है? ओ भाई क्या जगह पे केव बनाई है बे? This is the place. It's so well hidden. But there's nothing spooky about it. Let's go inside and take a look. डोमेन में जाएंगे बे, मजा सा आ जाएगा। सीक्रेट कैवन। इलेक्ट्रो भी नहीं है, डेंड्रो भी नहीं है, फिर भी जाऊंगा। डरते क्या, आलेतिम देगा ना वो ट्रायल में। बिल्ड देखी क्या आलेतिम का, क्या बनाया उन लोगों ने। 30 के मैक्स एचपी, 1.8 के अटैक, 105 एलिमेंटल मास्टरी, 61, 180, 135। अबे क्या आवाजें निकल रहा है ये? लाइट ऑफ फ्लायर इंसिडेंट, क्रिट डैमेज, क्या मस्त है बे ये तो। 4 पीस नॉबलेस, ये लोग नॉबलेस क्यों पकड़ा देते भाई। C3 811 8। Door of the Resurrection। Do 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 do। Weird. It's bigger on the inside than Paimon imagined. Are you sure it's still a work in progress? Ilyas, do you remember this place? Huh? Ilyas! Where'd he go? वो किधर चला गया बे? I don't sense him nearby. Did he get separated from us? Should we wait here or turn around and look for him? There's no need for that. Let's keep moving. हमको यहाँ पे फंसा के निकल तो नहीं दिया मेरा भाई। You in and see if he catches up to us. बोलता होगा इन लोगों को यहाँ पे फंसा देता हूँ, क्या ही पता चलेगा इन लोगों को। अबे इधर भी चेस्ट नहीं है क्या? बात कर रहे हो यार, चेस्ट नहीं रखते ये लोग यार। इस तरफ पे क्या है बे? इस तरफ पे भी चेस्ट नहीं है, ठीक है भाई। गान्यू पुल करने के लिए पैसा दे दो। मैं तो बोलता हूँ गान्यू मत पुल करो, अगर आपको करनी है आप कर सकते हो, वो बात अलग है। पैसा कहाँ से दूँ यार, मेरे खुद के पास पैसा नहीं है। अबे अबे ये क्या हो रहा है? ये क्या सिराज? It's okay, ये तो राजू है। अबे राजू भी है इसमें भाई। रेंचो पिया और यहाँ पे राजू निकला भी। I don't understand. Everyone knows that Johnny is stealing your research. Why is no one willing to ठीक है पर पैसे तो दे दो मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं है यार। मैं खुद F2 मतलब मैं खुद F2 पीऊँ। He asks you for help. Everyone knows what's going on. Do you know how many people are working on that project? If Johnny was kicked out because of academic fraud, that'd be the end of the project. अभी मेरे को फरहान भी चाहिए भाई। फरहान किधर है? राजू भी मिल गया भाई। He's obviously taking advantage of you. He throws you the hardest work. रेंचो मिली, पिया मिली, राजू भी मिला, अभी फरहान चाहिए मेरे को, वरना मैं ये स्टोरी क्वेस्ट नहीं करने वाला भाई। फरहान किधर है? That's not right. Why are you putting up with this? A lot of people warn me to not say anything, and I think they have a point. रेंचो मिला सही, यस रेंचो मिला। ये स्टोरी क्वेस्ट शुरू हुई थी तभी रेंचो और पिया मिले थे, अभी ये राजू मिला, अभी फरहान भी चाहिए मेरे को। तो He's at least paying me. मेरा फेवरेट मूवी है भाई वो, मेरे को चाहिए भाई। फरहान भी चाहिए। All-nighters and casual threats and insults, all for a measly 20,000 mora. He's treating people like cattle. Enough. It's fine. I just need to suck it up and get it done. What's the matter? इंडियन नेम है बट ये इंडियन नहीं लग रहे भाई। नेम बहुत सारे लोगों के इंडियन है सुमेरु में, पता है?
I think I saw a glimpse of Ilyas's past. You could read minds this whole time and you never told Paimon? Of course not. I was also able to see those memories just now. They were probably the ones that leaked out while Ilyas was connecting to the collective consciousness. Connecting collective consciousness? बस भाई पाइमन रहने दे तेरे दिमाग के बाहर की चीज है ये रहने दे भाई The hive has long been finished. The collective consciousness project is already complete and Ilyas is now returning to the collective. So he tricked us? Not entirely. Keep walking and you'll see why. I mean थोड़ा इंडियन लुक दे देते. अब इन लोगों ने सभी NPCs को ऐसे ही बनाया है तो कुछ अलग नहीं बनाए थे यार इसको सब पता है आलेतम को हराम शादे को फिर भी पता नहीं रहा मैं ये क्या है ऑप्टेन की ले लेता हूँ उसमें क्या है भाई ये ले भाई लगा भी देता हूँ और एक ले लेता हूँ और एक लगा देता हूँ ये क्या है ए चेस्ट मिला फाइनली एक और की एक ले लेता हूँ इधर लगा देता हूँ अच्छा मेरे को ये की लानी पड़ेगी पहले लग रहा है को ये तो मेरे को इधर लगानी पड़ेगी फिर ये की लाऊंगा ये इधर लगाऊंगा पिछली एक खिलाऊंगा इतना काम करवाते बे देख रहे हो तुम लोग इधर लगाऊंगा ये इजी बे अबे भाई बेकार कैरेक्टर भाई को तो Not now. Busted. टू आज मोला गेम प्ले मतलब Hey Sujit, welcome back. What's up? आज मोला गेम प्ले क्या होता है पर Really different from what Ilyas said. This place looks like it's been done for a while. मेरा भाई ट्रिक कर दिया मेरे को यार चीटिंग कर दी मेरे साथ आल हाजमोला अच्छा हाँ ठीक है भाई बेचारे को हाजमोला बना दिया रे पापा Contributing to the collective by only thinking to your strengths. How easy. अच्छा नहीं जा सकते नेवर माइंड Alhaitham. Just thinking of that name fills me with hatred. We must get rid of him. ये क्या रेपुटेशन बने यार लेते भाई लड़कियां गाली दे रही तुमको तो लड़कों की बात अलग है लड़कियां भी गाली दे रही भाई ठीक है भाई With the wind. फिर से कॉन्शियसनेस आई बे वो दिखाई देगा फिर से An entire year's worth of work down the मैं तो एक चीज कर रहा 600 प्रीमोज मिलेंगे हाँ क्या reputation? ऐसा तो क्या कर रहे हो बे Any idea how many people you brought down? You could have played hero any time. So why couldn't you have waited until भाई फरहान ढूंढना है मेरे को फरहान ढूंढना है रुको कंसंट्रेट I don't करने दो understand what you guys are saying. Are you saying you don't care that Raju jumped to his death? अबे It's a shame. What happened to him? राजू जंप टू हिज डेथ ये भी Everyone has been working hard to complete the project. भाई हेलो Bit longer. ये रेफरेंस भी लिया इन लोगों ने Chose now of all times to. In any case, we're done with you.
Because of your recklessness, the Matra are putting Johnny भाई on पूरी trial. 3 इडियट्स बना के रख दी है भाई, मैं तो मजा आ गया मेरे को तो देख के. None of this affects you at all. But do you know how many people, myself included, needed this project to complete their studies? Now our futures are भाई up क्या in ही the air. रेफरेंस उठाया The इन worst लोगों ने comes to भाई, pass, मजा we सा आ won't गया be ये तो. able to graduate. Do you understand now? I'm sorry. There's no need for an apology. It's not like I'll accept it anyway. You'll pay for this. मेरे भाई ने तो अच्छा काम किया था यार, बेचारे को ऐसे ही गालियां पड़ रही. Hey, you're blinking out again. What did you see this time? 6 कलेक्ट करो, 100 प्रीमोस, टोटल 36 है, सो 600 प्रीमोस इजी. Don't jump to conclusions just yet. Save your words for when we see him. ठीक आहे. Hey bro, E-hacker, I guess ऐसा ही नाम है. वेलकम टू स्ट्रीम, व्हाट्स अप. अबे ये आंटी जी क्या कर रही है? ये क्या पहना हुआ है बे इसने? कुछ तो पहना हुआ है. ओके. ऑल्सो गन न्यू है जी. अबे चेस्ट वेस्ट नहीं रखते क्या ये भाई? प्रीमोस दे दो यार थोड़े से. माय फारूजान इज ऑन बिल्डिंग प्रोसेस. ओके, क्या आपके पास कैरा है? भाई ये तो सो रहा है मस्त घोड़े बेच के. with us. लेने ही वाला था. जस्ट सीइंग पॉइमोन, सिर्फ देखने आया था कि क्या है आगे. फिर से आया, फिर से आया. Alias, this is all अबे ये भी फरहान नहीं, मेरे को फरहान चाहिए भाई. फरहान किधर है बे? Well, to pass this course, you must complete a paper with other researchers. I know you're a hero for fighting academic fraud, but well, we can't make exceptions for heroes, now can we? Maybe you should try to improve your relationship with the other researchers. Getting a reputation for being too unconventional will not stand you in good Bro, I have stead already in the long completed run. this quest. Nice. I understand. Nice, nice. Bro, can you make me friend? Yes. Give me your UID. Who are you? ये कौन है बे? फरहान, सिराज है बे ये तो. My name is Siraj. Please, yes, yes. Siraj, I've heard of you before. Do you need something from me? The world hates people who don't fit in. I imagine you've had your fair share of trouble. भाई मेरे को आपके नाम के पीछे का कारण जानना है. मेरे को डर लग रहा है भाई. हैक करो और मेरी आईडी को हैक कर लिया आपने तो. हाँ बताओ बताओ, ऐसा नेम क्यों रखते हो भाई? I'm working on some research that will help you merge into a collective. That way, your life won't be so dolorous. How about it? Wanna have a go? No, it's just my gaming name, that's all. ठीक है What भाई. did you see? Siraj persuaded Ilyas to join the hive. Ilyas wasn't forced. I can't believe it! He really did trick us! That giga jerk! No, Siraj is the real giga jerk here. Ilyas is just a regular jerk. Ooh, Paimon's so mad! We're gonna find him and we're gonna make him explain himself! ठीक है, ठीक है. ढूंढना तो पड़ेगा भाई. ई का है? कुछ नहीं है.
क्या ये थंबनेल आपने पिक्स आर्ट में से बना है? नहीं, मतलब वही है, उस जैसी ही है, पिक्सल लैब में बना है, पिक्सल लैब। You've come. I intentionally slowed my integration into the collective consciousness because I wanted to see you one last time as Ilyas. Don't tell me ये And सिराज I है। wanted to apologize to you as him. It was only at Gandharvaville that the second thing I must do occurred to me. Bring you all here. फॉन्ट देखा To देखा सा throw लगा off मेरे the को। ठीक है, mantra बाय। and bring Alhaitham to the hive. That was my task as Siraj number 36. You were already Siraj number 36? But you passed the Matra's lie detector test! Yes, I truly did forget many things during that time, even my identity and assigned responsibilities. फिर याद आ गया इसको धीरे धीरे However, करके। it's not that I got scared and ट्विस्ट forgot. ला दिया बे स्टोरी में। I नाइस। chose to delete those memories. It's difficult to fool Alhaitham, so I had to create the perfect guise for myself. Still you And the can't best guise is when you believe fool your him. own lies. Bro, skip the story I only fast, told bro. you that the क्यों hive was भाई? incomplete because नहीं I भाई, had स्टोरी deleted my देखने के लिए तो memories गेम खेल रहा है of भाई। its completion. It was finished a long time ago. Before I left, I was already living as number 36. Now, I choose to return to that identity. Only here can I be truly free. Okay, as you wish. ठीक है भाई। That's all I wanted to say. After I enter this room, my consciousness will merge back into the collective. And so, this is goodbye. Alhaitham भी लाइक ये सब Is बंद this your करने तो मैं decision? आया हूँ। हे, तुमको क्या लगा तुमने मेरे को फूल बना दिया? फूल तो तुम हो। Yeah, the person we know is Ilyas, not Siraj number 36. The outside world is painful sometimes, but Paimon doesn't think that's a reason to run away. Do you need more time to consider, Ilyas? अबे सिराज आ गया। That is Siraj. So you're that giga jerk. Giga jerk? How bold of you. अबे यार मेरे को फरहान नहीं मिला यार। दर्द हो गया मेरे को। I modified Akasha terminals to allow users to share memories and emotions. Then, I recruited researchers from the academia to build a collective consciousness. I assigned numbers to everyone and divided the experiment's tasks amongst themselves. Here, people can live easily and happily without needing to exercise complex mental thought. Even my name is Akash. Oh भाई, hey Akash, welcome to the stream. क्या हाल है? You're just trying to justify yourself. Then I ask you, what's the difference between here and the outside? There are researchers at the academia who engage in dangerous research in extreme environments while others become idle. Just from Kerala, that's all. People हाँ are क्या? so obsessed with collective will. केरला मस्त जगह है भाई घूमने के लिए। मेरे को भी आना है। Isn't that right, Ilyas? There's no need to deny this, as it is fact. It is natural for social creatures to congregate together. And the terminus of conformity is a collective consciousness through which even an ordinary bee colony can become a powerful swarm. Replace the bees with humans, and this model becomes even more Bro, can you potent. check my account after this Welcome quest, please? to the Yes, hive, बिल्कुल। Alhaitham. क्यों नहीं? You once arrogantly आईडी दे दो denied अपनी। the merits of this और project बीच में before the क्वेश्चन grand मार्क या ऐसा stage. कुछ लगा के डालना, पूरे नंबर Few नहीं आएंगे। simple words from you, and my research was consigned to nothingness. Of course, I'm well aware that you don't care about any of this. You don't care about the pain of others. But I didn't give up. I made my thesis into reality. When we arrived, I noticed many empty rooms in the hive. Oh, you noticed that? Then can you guess where their inhabitants are? The answer is the academia. They're executing another phase of the plan. The plan to install me as a sage. The collective consciousness links all of us into a single mind,
तेरे को Showcasing क्या our लगता है? individual ये strengths तू बता के as we work बचे together. जाएगा भाई हैं? हाँ? We are able to execute complex undertakings while instantaneously modifying our strategies in response to unexpected situations. Everything has been proceeding smoothly. You are our biggest obstacle. With you out of the way, I'll use my growing influence to turn the collective consciousness into a legitimate study. The project will snowball until ultimately everyone will be part of my hive. No. The hive will be in control. And it will lead the academia towards a new future. हैं? ऐसी बात है. What can you achieve with mere words? You weren't even able to change Ilyas's mind. Return to the hive, number 36. अबे इसने भी पहन लिया? Yes. अभी तक तो नहीं पहना हुआ था भाई. Don't go back! Look! There are lots of people out there worried about you. बात तो है. And you aren't an याद outcast. करे तेरी मम्मी पापा तेरी बहन. That's easy for you to say, given that you're travelers. Will you two continue to stay at the academia? When you leave, tragedy will repeat itself. Return, number 36. You know as well as I do that comforting words don't make life any easier. Ilyas? Why? You two are just as arrogant as Alhaitham. विजिबल You इन चैट think that नहीं. everyone should be like आपको you and दो live दो according to their own truth. नंबर के बीच में फुल But you स्टॉप don't या realize कॉमा या क्वेश्चन that मार्क most ऐसा कुछ people लिखना simply पड़ेगा want तभी आएगी. easy lives. I allowed number 36 to leave the hive without his memories only because I knew he would eventually return. या This तो फिर proves that I know more about वर्ड्स में human लिखना nature पड़ेगा than you 1 do. 3 2 ऐसे. Alhaitham, do say a word or two. Yes, I will yes. consider them as your अभी last. दिख रही. Yes. I made those words quite clear a year ago. The model you presented was extremely unstable. No amount of garish is packaging will visible, change yes. its fragile nature. It can't be helped. If you were clever enough to realize those problems, then you would have been aware that the hive changed when Okay, I'll Elias wait. returned Thank you to very this much, collective bro. consciousness of yours. What? What's happening? And also send me friend request. Okay. The collective needs motivation to execute its plans, just as machinery requires energy to operate. That's why you, as the Overmind, synchronized your hatred of me into the collective, prompting them to create and execute a plan to eliminate me. However, when Ilyas returned to the collective, his memories and emotions were shared with the rest of its members. This includes his perception of me. Thanks for that. You know, you don't seem like such a bad So person. then we can play together. Strange, Okay. isn't it? Why did I have those thoughts at that time? This contradicts the hatred you had provided them, and these two differing emotions will give rise to new conflict. So that's it. Wait, so you knew that Ilyas would return to the hive? And then you pretended to keep him around just to fool Siraj. Wouldn't expect any less from you, Alhaitham. Once the collective consciousness bugs out, we'll take that opportunity to... wait. It's back to normal already. Alhaitham, I told you. You're too arrogant. Did you really think that your little scheme would be enough to destabilize the hive? Ilyas's return had indeed introduced abnormal emotions into the hive, but such a meager drop cannot give rise to waves. Your struggle has been in vain, and it's time to end it. Allow me to show you what makes the collective consciousness so formidable. अबे यार ये फंगाई डाल के तू हमको डराएगा भाई. ठीक है यार. शर्म है भाई बिल्कुल भी. Something feels off about them. I also integrated monsters into the collective, though I ranked them last. Even so, they are part of it. Despite their lack of intelligence, perfect cooperation can be achieved, much like soldiers who have undergone strict भाई 3 training. फंगाई डाल के वो लग रहा है हमको डरा देगा भाई. ठीक है भाई ये कर लो Endless भाई. waves of monsters. You will all pay for your ceaseless arrogance. Hey, Alhaitham? Your plan didn't work, so what do we do now?
I've already sent my gift to the collective. It'll take some time for the recipient to receive it. You two just need to brace yourselves for the nuisance in front of us. Alright! Paimon doesn't know how you get so confident, but we'll hold them off for as long as we can! We? Paimon? Are you sure about that? Witness the power of Gwa. Rain outlines your fate. Here comes the catch. Quietly now. Here you are. किधर मारा रे? Alhaitham isn't that bad of a person. But it has to be done. He must be eliminated so that we can evolve. You see? That is the will of the collective. Even with the hatred gone, they continue their work. An external anomaly cannot shake the collective stability. ठीक है देखते ब्रो. कुछ ज्यादा ही नहीं बज रहा मेरा भाई. Let me weave you a verse. He won't hold out for much longer. He's a lot tougher than we imagined. Something's gone wrong with the Academia. Not Busted. What's going on? हो गया भाई तेरा. Sudden influx of information. Silence! As the Overmind, I command you. I don't have Alhaitham, but I have his weapon. Okay भाई. किसके वेपन के लिए पुल किया था भाई आपने जो इसका वेपन ले आए? Witness the power of Gwa. Here comes the catch. Quietly now. Defract. How is that possible? Why hasn't it been resolved yet? अबे इसको डाल दिया पूरा. What? The will of the collective cannot be wrong. The Overmind must have made an error in his judgment. But GeForce is the most intelligent among us. He is number one. Cutscene, let's go. What have you done? Calm down. Don't you have an easy way to figure this out? You were only designated as number 36? What a shame. From what I can see, your talents merit a smaller number. Putting aside the validity of the data, it is meaningless to judge individuals based solely on their jnana energy. What you said to Ilias has now become a memory shared by all members of the Hive. I see it now! You've channeled and amplified their selfish desires! You're trying to destroy my Hive from the inside out! Human minds are not infinitely pliable. And your Hive has... उल्लू बनाया बड़ा मजा आया कर Once दिया. your authority as Overmind starts to wane, it won't be long before your subjects snap back. Is it worth living here like a machine? Being a tool for the rest of my life? As soon as one person begins to have these thoughts, selfishness, doubt, and fear will propagate, thanks to the web of consciousness that you built. At this stage, your so-called Hive has already fallen. It's not over yet. I am the Overmind! There has to be a way! It's too late. गिर गया Once the बेचारा. desires of the Hive accumulate, beyond a certain threshold, they will kill their king. I wouldn't have suffered such a disgraceful defeat if I was the Overmind. My number shouldn't be so far down in the list! Siraj is a liar! This isn't what we agreed to! I should be the one in your position! Dude. क्या ही कटसीन था बे.
ओ मैन, हाँ ना भाई, क्या ही कटसीन बनाते बे ये लोग, मजा सा आ जाता है देखने में. The hive shut down? It's over. What happened just now? Members of a collective consciousness are more likely to reach a consensus because of their shared memories and emotions. For example, Ilias did have differing perceptions, but he ultimately followed the collective consciousness's judgment. However, this system is far from perfect. Based on this logic, the collective consciousness will generate an intractable diffusion effect upon encountering negative emotions. Selfish The desires. disturbance that Ilias caused wasn't for naught. It made the collective question the Overmind. Setbacks in the plan further amplify doubt, which diminishes the Overmind's influence. This inevitably causes the collective to generate negative emotions. Apprehension, disappointment, panic, avarice. These negative emotions can be very well hidden, as humans generally do not share completely transparent channels of communication. Short But बे in a Alhaitham. hive, where there are no secrets, भाई आर्कन negativity क्वेस्ट can में भी spread क्या ही like a दिमाग tidal लगाया था wave. उसने. Of course, बंदा what I है said तो to है भाई, Ilias was the खतरनाक trigger है for भाई. all of this. A few words were enough. Believe in the power of words, Siraj. You were already thinking of a way to destroy the collective consciousness. Even back then, you knew that Ilias was the bait all along. तो फिर But how did you क्या know? समझ रहे हो तुम मेरे भाई को? Since when? I knew it from the moment I saw him. Moreover, I never looked down on you. My opinion of you has always been objective. You have a naive view towards the concepts of collective consciousness and human evolution, but you are intelligent and disciplined. हेलो भाई, कैसे हो? हे You've हेटर never राहुल, let a वेलकम टू test स्ट्रीम. subject व्हाट्सएप, escape. लॉन्ग टाइम नो सी, क्या Mistakes like that हालचाल? are beneath you, and you also won't leave any mistake without a resolution. I never thought I'd hear those words come from you. But if you're saying that out of sympathy, spare me. I know very well that you've never viewed me यार, as आई an एम स्टिल equal. वेटिंग फॉर फरहान dude. When you were with us, you always had a distant look in your eyes. You don't need to hide it. I know it better than anyone else. The arrogance that comes with being a genius. Nobody likes being treated like that. Your perspective is entirely born from your habitual way of looking at things. From your perspective, you probably think I'm like you, someone who doesn't fit in. However, I've never placed myself on a pedestal. I just want to distance myself from meaningless noise and look at everything objectively. On the other hand, you have failed to come to terms with who you truly इचिको भाई, ये are. न्यू इवेंट You में care तो too बहुत much सारा about winning प्रीमोज and how मिल गया others ना. perceive you. यार वो न्यू वाला इवेंट नहीं किया, तभी तो मैं ये कर रहा हूँ. ये करूँगा, उसके बाद वो I'm the चालू होगा arrogant one इवेंट. here. Is that not so? Arrogant and emotionally fragile. You view people as a simple mediocre तो मैंने अभी तक करा नहीं, पर हाँ, वो while you regard लाइक me बिग as इवेंट है तो one of your मिलेगा, kind. अच्छा खासा प्रीमोज मिलेगा. उसमें बहुत प्रीमोज है. यस, I have lost. लाइक 90-20 डेज की जो me back to इवेंट्स the होती है उसमें से academia मिलता है to बहुत stand सारा, trial. लाइक बिग इवेंट्स जो You होती है वो. will stand trial, yes. But arresting people isn't in my job description. I'm just an ordinary staff member. I believe it is the General Mahamatra's duty to escort you away. आए क्या जनरल महामात्र? ओ माय गॉड, साइनो, लॉन्ग टाइम नो सी, क्या हालचाल? किधर से भाई? Doing here? I followed the symbols. Looks like things have already been settled. यस सर, सब दिमाग में सोच के रखा था आलेतम भाई ने भाई. चलो भाई, जाओ जाओ. Symbols? I left a similar picture in my letter to him, and I made several मेरे को similar काजुआ symbols चाहिए on the और way मेरे here. पास अभी बस 25 पुल विद 50-50. हाँ क्या? वो तो हार्ड है यार, देखना पड़ेगा कि फर्स्ट हाफ में आ रहा है या सेकंड हाफ में आ रहा है. When Paimon first saw you, Arav said that you had left a letter for Sino. So you really did know that something was up with Ilias from the start. You lied to us too! It'd be best if you didn't spout nonsense. I never सेकंड employed any में भी mode of आया trickery on तो you. भी शायद नहीं मिलेगा, तो By the way, मिल I came सकता है across some शायद. information at the academia इवेंट्स a आएगी few बहुत days ago. भयंकर. If you practice the method discussed therein, your vision may improve. Do you need it? Seriously? This guy. Anyway, Sino, Paimon heard that Siraj sent more people to the academia. We can't let those jerks get away. Don't worry. The Matra have started screening suspicious persons. And we've already arrested many of Siraj's associates. This was likely one सबको पकड़ लिया factor बे that caused the एकेडमिया में Hive's भी. consciousness to waver.
ब्रो Everything क्या हुआ went बे? as you predicted, Alhaitham. Good. Seems like the interesting part is already over. I'll leave the arrests to you all. See you. भाई वो CS:GO का प्राइम वर्जन कितने में आता है पता नहीं भाई CS:GO तो भाई And off he goes. There still are a lot of test subjects here, so let's stick around for a while. ए फरहान मिला क्या भाई? फरहान चाहिए मेरे को, फरहान किधर है? ये कारवान है भाई, फरहान नहीं है भाई, मेरे को फरहान चाहिए भाई। कारवान बारवान नहीं चलेगा भाई। ब्रेंचो था, राजू था, पिया थी भाई, मेरे को फरहान भी चाहिए भाई। जस्ट सिंह गोली। अबे ए इस लड़की का नाम गोली है बे। गोली बेटा मस्ती नहीं। Whether he's the scribe or the acting grand sage, we can't afford to offend him. It seems our future at the academia will be full of uncertainties. We can discuss the future later. Leaving the collective left me with a strange sense of guilt. I didn't feel anything towards Alhaitham at first, since he wasn't well known. गोली बेटा मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। Negative though. Siraj made us hate Alhaitham, and we blindly accepted that hatred and thought of him as a bad person. बेचारा मेरा भाई अच्छा बंदा है भाई। जस्ट We've सिंह done a lot of irrational things. I guess we're getting what we deserve. Could you help us apologize to Alhaitham? मैं क्या हेल्प करूं भाई? Paimon will help you tell Alhaitham, but whether he chooses to forgive you is up to him. It's okay. No matter what he chooses, apologizing will make us feel slightly better. If he chooses to remember this, we're prepared for our punishment. It's time to go. Let's go. चलो भाई निकलते हैं, बोलते भाई। So, were they all duped? We can ask Alhaitham about that later. हे इलियास भाई तू बता भाई अभी। Looks like I can't exist as Siraj number 36. Yet, my life as Ilyas goes on. भाई तुम भाई इलियास बन के जी भाई। ये क्या सिराज नंबर 36 भाई? ये क्या बनना है भाई तेरे को? शर्म है भाई हल्की सी। But I didn't have the courage then. So in the end, I lost my sense of justice. But I also wasn't able to conform. Ilyas? Don't be sad. I'm the one who deceived you. However, I didn't come out of this completely empty-handed. The moment the hive collapsed, an idea popped into my head. I realized that the collective I was always trying to fit into wasn't as powerful as I had imagined. Understanding that gave me courage somehow. Perhaps one day I could be just like Alhaitham and not care about what anyone else thinks. ठीक है ठीक है। Do it. Paimon believes in you. आलहैथम इंस्पिरेशन बन रहा है भाई यंग लोगों के लिए। I should get going. I'm one of the primary suspects in the case, so I'll have to receive my due punishment. Can you keep this a secret from my parents and my sister? I just don't want them to worry. Also, please apologize to Alhaitham for me. Goodbye, you two. बुई बुई। और All the साइनो test भाई subjects have been taken away. और मेरे लिए कोई काम? I'll have my subordinates seal the place, retrieve all documentation, and destroy the system. Are you too hurt? I brought bandages and hemostatics. नहीं भाई मेरे को दर्द नहीं होता भाई। Just a little tired. Get some rest. Alhaitham is probably waiting for you at the entrance. Go see him when you're done here. Watch out for any of Siraj's associates who might still be in hiding. If you encounter anything you can't take care of, come find me at the academia. ठीक ठीक। Okay, you stay safe too, Sino. बेचारा कितना मस्त बंदा है ना। Alhaitham. चलो भाई आलहैथम से मिलने जाना पड़ेगा अभी। ये चेस्ट तो देके जाऊं। प्रीशियस चेस्ट लेट्स गो। कुछ तो दिया हराम जादू ने। The matter's settled. We can return now. चलो भाई। I actually thought it would have been settled sooner.
This took much longer than I expected. बात तो है. Judging by your faces, it seems like you two still have some questions. That's right. I respect your curiosity, but I'm off the clock now, so I'm not going to field any questions. ठीक है भाई. Bro, now check my account. Yes. भूला नहीं हूँ. करता हूँ. रुको. You याद है मेरे को. couldn't tell that was an excuse just now? What? Are you kidding me? Today until you explain what happened back at Siraj's secret base. नहीं बताएगा. नहीं बताएगा. पता था नहीं बताएगा. क्या बंदा है बे. Are you done? Your behavior is reminding me of some other people. कौन से भाई? Stop changing the subject. It's too much of a hassle to explain everything from the top. You know what? Come with me. ठीक है. Where to? You'll know when we get there. ठीक है भाई. मेरे को दाल में कुछ काला लग रहा है भाई. फॉलो अल्हैथम. रुको. फॉलो बाद में करेंगे. पहले मेरे भाई का देखेंगे. काउंट 861 561 486. ये क्या नाम है बे? इंडियन गेमर है ये. AR-56 ईतो. अरे ताकि ईतो. लेट्स गो. 90 लेवल 1.1 के अटैक 2.5 के डिफेंस 55 182. ओके. एनर्जी रिचार्ज हल्का सा कम है यार. बाकी तो रेशियो तो ठीक है. मतलब कम क्या है ही नहीं एनर्जी रिचार्ज. 2110 नाइस रोल. 22. ओ भाई 1113 नाइस. 13-6 nice. And crit damage. Crit rate bro. अबे 2 पीस क्यों है? 4 पीस लगाओ यार. ढूंढो. मिलेगा 4 पीस लगाओ. 579 ओके. Zhonglis 47k HP. ओके. फुल शील्डर है क्या? 17 147 154. ब्लैक टैसल. क्रिट रेट कम है और क्रिट डैमेज इतना ज्यादा है. और ये भी भाई 2 पीस एम्ब्लम. आर्टिफैक्ट में मतलब आर्टिफैक्ट सेट बनाओ भाई. 26 6 19 26 3 22 12 2 हो गया. एंड HP 13 HP ये सब ठीक है. पर आर्टिफैक्ट सेट बना. 2 पीस एम्ब्लम 2 पीस नोब्लेस लगा सकते हो. 2 पीस और क्या लगा सकते हो? आर्किटेक्ट पेट्रा लगा सकते हो और टेनासिटी लगा सकते हो. 2 पीस ठीक है. 6 6 10 गन 2.2 के अटैक 13 292. ओके. थंडरिंग पल्स. व्हाट द हेक. 292 ब्लिस्टर. ठीक है ये ठीक है. 22 6 21 6 13 8 18 3 एंड इसमें क्रिट रेट आ सकता है थोड़ा सा. बट एनीवेज नाइस बिल्ड. 10 6 6. अबे ये क्रायो डैमेज बोनस ही था ना. हाँ चलो ठीक है. वो ना 36 219 क्रिट रेट कम सा लग रहा है मेरे को. विडसित 4 पीस एम्ब्लम ये ठीक है. 4 पीस एम्ब्लम ठीक है. क्रिट रेट सा नहीं है पर 17 10 27 ओके. नाइस रोल. 10 7 7 क्रिट रेट. ये चेंज कर सकते हो. हाइड्रो डैमेज बोनस इसमें क्रिट रेट डैमेज आए तो. और ये क्रिट रेट लगा सकते हो अगर आपको क्रिट रेट कम पड़ रहा हो तो. वैसे कम ही है. पड़ रहा हो तो नहीं. आई थिंक 50 के आसपास तो क्रिट रेट होना चाहिए. क्रिट डैमेज थोड़ा सा कम हो जाएगा चलेगा क्योंकि आपने ये लगाया हुआ है ना 4 पीस एम्ब्लम तो इसमें बढ़ता है एलिमेंटल बस्ट का डैमेज. ठीक है. अगर आप वैसे भी ये यूज़ कर रहे हो अल्ट तो या एनर्जी रिचार्ज ज़्यादा है. मतलब एनर्जी रिचार्ज ज़्यादा है तो ये कम कर सकते हो और क्रिट रेट बढ़ा सकते हो. अटैक 1.8 की 7250 ओके. ये अच्छा है. ब्लैक क्लिप पोल नाइस.
2 piece viridescent, 2 piece vermilion. Okay, nice. 13 7 21 8 15 14. ओ भाई क्या रोल्स है बे? 33 6. व्हाट? एक रोल क्रिट रेट पे हुआ है फिर भी 33% क्रिट डैमेज. क्या रोल्स है? वाओ, नाइस. एंड 9 ये बेस्ट है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये परफेक्टली बिल्ड है. शाओ नहीं डा तो 60 148. ओके, डीपीएस नहीं डा और व्हाट? ट्विन नेफ्राइट 3 स्टार दे दिया रे पापा. 2 पीस विरडेसेंट. वेट व्हाट? 2 पीस ब्लिजर्ड, 2 पीस विरडेसेंट. 4 पीस डिफूड कर दो इसको. एकदम भयंकर जल्दी से. ये देख के कोई रो देगा. ठीक है, 4 पीस डीप फूड कर सकते हो या फिर 2 पीस करके ईएम बिल्ड करना है तो 2 पीस करके ईएम कर सकते हो. 32 के मैक्स एचपी, 235 एनर्जी रिचार्ज. अकेला फोन या नाइस. 21 2 14 एनर्जी रिचार्ज 18 एचपी परसेंटेज 27 एनर्जी रिचार्ज नाइस. एंड एचपी C5. ओके, ये ठीक है. फारूजान 1 के अटैक 26 172 263 एनर्जी रिचार्ज. ओके, फोनियस वॉर बो 4 पीस विद डेसेंट 36 3 18 14 10. इसमें भी क्रिट डैमेज दे दिया रे पापा. अरे क्रिट डैमेज पे ओनली क्रिट डैमेज में फोकस मत करो. क्रिट रेट भी उतना ही चाहिए क्योंकि डैमेज देगा पर कंसिस्टेंट नहीं होता तो कैसे चलेगा. ठीक है, समझ रहे हो? तो क्रिट रेट ऑलमोस्ट 50 के आसपास तो चाहिए रहता है मिनिमम. आप डैमेज दे दोगे बहुत भयंकर पर फिर उसका कंसिस्टेंसी नहीं आएगा तो कैसे चलेगा. फर्क नहीं पड़ता फारूजान का. फारूजान भाई वैसे भी वो भी है. फारूजान तो बफर है पर तो भी यार इतना ज्यादा क्रिट डैमेज. पर क्या आपके पास कह रहा है आप फारूजान किसके लिए बिल्ड कर रहे हो? ये तो आलहेतम का होम पे आ गया. Is this your home? Yes. Yes. What's with you all of a sudden? Being all polite and inviting us over? अबे कावे, I mean शाओ को भी बफ करता है मास. अच्छा हाँ, शाओ को भी करता है, बात तो है. शाओ, बेनेट, फारूजान. Stop making a fuss. They're obviously guests. You're not from the academia, are you? No, we are not. I'm unsure she's seen you before. Zhongli. You're that person from that time in that one place. Wait, what? How do you know me? Oh no, do people know that I live here? What? You're embarrassed only now of all times? Oh, you guys are roommates! Yes we are, but keep that to yourselves. Please, don't tell anyone else. I keep a few books on collectives and the subconscious here at home. I'll get them. You all chat in the meantime. Hey! You're leaving just like that? What's the deal, Alhaitham? सिर्फ रूममेट्स. BTS भाई, hello. What is this behavior? Sorry, I know we've only just met, but I have to ask. Are you, you wouldn't happen to be actors that Alhaitham hired to pretend to be his friends, would you? अबे, what? What? I've never seen him invite friends home before, so please excuse my surprise. You guys get it, right? You know, with his temperament and stuff. But aren't you friends with him? I wouldn't say friends exactly. झगड़ते रहते बे दोनों. Okay, well, we used to be, but we're not anymore. ठीक है भाई. Don't worry about it. My name is Kaveh.
I'm sorry to have met you under these circumstances. Anyway, please don't say anything about me living here. You seem like you got a lot going on. So maybe Samora will make Paimon shut up. Are you serious? How could you... Blackmail कर रही है. You're Alhaitham's friends. What? That was a normal response. You exposed your own weakness. Still, why do you have to treat me like he does? Judging by the deafening din coming from the living room, you all must be getting along quite well. क्या बात कर रहा है? तेरे को लग रहा है ऐसा? I'll leave the books here. ये सब पढ़ लो, वो बोल रहा है. Friends with benefits. आ क्या? Paimon's dizzy from reading. This is way too ठीक है. Paimon भी like हमें नहीं जानना है क्या हुआ. instead. Paimon wants to know, oh, how did you know about the collective consciousness's weakness? A year ago, Siraj presented his thesis to the Grand Sage, who offhandedly asked for my opinion. I actually responded with 2 lines of reasoning. The first, as I've already said, was that his research was on human evolution, a subject prohibited by the academia. The second was that I thought the direction of his research was too extreme, but his approach too conservative. Wait, that's too conservative? He built such a large lab, gathered all those people, and even tried to get rid of you! One way to stabilize a collective consciousness is to remove the test subject's humanity altogether. The optimal solution to achieve collective consciousness is to focus solely on the overmind and treat the other test subjects as tools. That's way too dangerous. You're not seriously considering that, are you? 'Cause, I'm merely stating the facts. If Siraj had done that, I would have felt his work to be just as senseless. It's impossible for any species to evolve overnight, and humans without their humanity cannot be called humans. That's why the academia prohibited research into human evolution. Most research of this kind tends to run अबे ये कान में क्या contrary to पहन के evolution. घूमता है भाई? मेरे को जानना है. Paimon gets it now. Ha! That's rich coming from you. If humans aren't humans without their humanity, then you'll probably evolve into some other species in another decade, I wager. What about you? Are you going to devolve into a fungus? At least I'd be a fungus with empathy. Sorry for eavesdropping, but what happened to you guys? Are you in trouble? नहीं नहीं. Sort of. We encountered a strange researcher that had it out for us. Are you all okay? Yes, sir. To be more precise, they had it out for Alhaitham. We just happened to be there. Huh. So that's how things went. ट्रैवलर पे सिम कर रहा है, ये पक्की बात है. तभी पूछ रहा है. वरना नहीं पूछता भाई. सिम पे बे ये पक्की बात. Could have been avoided, right? Plus, he could have helped me with the housework for once. See those books? They've been sitting there waiting for someone to sort through them for an age. If you're not gonna read them, tidy them away. They don't belong there. Bro, क्या हुआ बे हैकर भाई? Can you feel the awkwardness in the air? I hope you're aware of your lack of conversational skills. Oh, so the pot's calling the kettle black, is he? Well, having said भाई ये that, दोनों हमेशा झगड़ते are क्यों you रहते हैं? मेरे को ये जानना है. I'm doing quite well. Much better than that painting you're trying to hang on the wall. You don't understand anything. My which character build you like Criticizing my most? taste Shao. in decoration. Kaveh seems to be upset again. Paimon can't tell which of them is more problematic. Let's just get this over with and leave. I blame your curiosity, Paimon. You whisper very loudly. Yeah, Paimon's been told that. Do you have any more questions? Let Paimon think. Oh, by the way, the other researchers apologized to you. They hope that you can forgive them. I bear them no ill will. More accurately, I don't really care about what they think of me. To some extent, they were also fooled by Siraj. The Matra will take this into account at their trials. Ilias also said that he wanted to tell us the truth at Gandharvaville, but he didn't have the courage. He apologized to you too. It doesn't matter. ठीक है. I never considered asking him to come forward with the truth. Judging from his experiences, he's more courageous than the average person. There's no need to lay even more criticism on him. हाँ भाई उसने सब सच Criticizing बताया the था भाई brave हीरो बना था only वो. shows how weak you yourself are. I'm going for dinner in 10 minutes, so I'll field one last question. Paimon doesn't have any more questions. How about you?
What were you actually interested in, Alhaitham? Oh, yeah, that's a good question. You only started investigating with the Matra at the Academia because you were interested in something, right? But after meeting Siraj, it didn't seem like you were interested in him or his experiment. I had no interest in him personally, but I was curious as to why so many people were willing to form a collective consciousness with him. I now understand the reason. Something to do with the current atmosphere at the Academia, I suppose. Correct. The fall of the Sages and the shutdown of the Akasha terminals deeply affected the Academia. The fact that Siraj's project attracted so much interest despite not being approved speaks to the lack of research projects as of late. As the acting Grand Sage, I'll have to figure something out. In addition, what happened to Ilyas is worth our attention. Reporting academic fraud was the right thing to do. He didn't deserve the outcome that he had received. Paimon understands now. Oh, you're pretty serious when it comes to work, huh? I think minimum viable seriousness is a more apt description. I'll do my best to take care of this mess until my resignation is approved. अबे Wait, क्यों? your resignation? किसको बना रहा है फिर सेज? I've already submitted my resignation to the Academia. Soon, I'll resign as the acting Grand Sage and go back to being its scribe. I don't think Siraj knew इसको about scribe that. में भी मजा If आता he है. had waited just a few more days before acting, I would have already resigned. What he'd do then wouldn't have been any concern of mine. However, even without my input, his unstable model would have collapsed for some other reason, so it makes no difference. But why do you want to resign? I'm not suited to be a sage. ये nor कब do से I बोल want रहा है to मेरे be को one. सेज बनना ही नहीं, मेरे को सेज The बनना ही official नहीं है. process to select the पर new यार फिर sages is कोई already मिलेगा underway, क्या but इसके जैसा this process is long and takes सेज far too बनने much लायक? time. If I serve as acting Grand Sage for too long, the position might become permanent. That would be troublesome. This job isn't something I want to spend the rest of my life doing. You have a pretty clear direction for It's yourself. important to keep your priorities straight. ये क्या कर रहा है Well, पीछे? it's about time. You two should grab some dinner as well. Oh, now that you say that, Paimon's kinda hungry. See ya! We're gonna grab some yummies! Goodbye. See ya. Okay, that is it. Ah, yeah, finally. अबे इन लोगों ने स्टोरी क्वेस्ट बहुत The name Siraj doesn't ring a अबे bell. Was he in your class? He isn't someone who would leave an impression, so it's expected that you don't remember him. I've always had a hard time appreciating the way that the Academia pressures people by labeling them as geniuses. But even so, the Academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm delighted to see that you have a base amount of self-awareness. If the people in the Academia haven't gone mad, they'd know that I'm much more suited to be a sage than you. अच्छा इसको सेज And I बनना है. suppose they'd let everyone know that your career as a sage will be as shaky as that painting. Again, तोड़ा that's तोड़ा mighty तोड़ा. rich coming from someone about to resign. In a few days, you'll be managing files again. You'll be back at rock bottom. But my salary will likely stay the same. Wait, what? How come? Why do you get special treatment? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his client. छी बे. You... बहुत तोड़ रहा है बे ये तो. I took time out of my day to clean the living room for you, and this is the thanks I get for it? I'd have been better off catching up on my work. I still have designs to finish. Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to buy some furniture with that Mora. वाह भाई. Are you trying to annoy me to death? The decorations you buy keep getting uglier and uglier. What's the point of having a boring wood carving in your house? You'll have to blame that on my financial freedom. Fine. Go ahead and hide behind your financial success if you want. But if we forget Mora for a second, do you have anything of true value to boast about? I think I'd have too many choices, to be honest. You, on the other hand, can you think of any redeeming features at all? अबे भाई. Artistry, for sure. कितना तोड़ेगा? The first thing about interior design. Don't go off buying random furniture unless you take me with you. So I'll have to bring you along and then buy you drinks? Of course. But why would I do that? It would just be another form of a loan, and you'd have to pay me back eventually. Lol. Can't you just be nice and not ask for the Mora back? नहीं. Pretending that you're not in debt is as ridiculous as pretending you're not living in someone डेट else's home. ठीक है भाई बेटे भाई ये Word कर will get लो. out sooner or later. Speaking of which, your friends won't say anything, right? Tell them to keep all this a secret. There's no need to hide it so carefully.
I think the truth's already भाई out. पर ये यहाँ पे छुप के क्यों रह रहा है, मेरे को ये जानना है अभी. कुछ तो बात है भाई, कुछ तो गफला किया है इसने. No, it can't be. Head to the academia's main hall to ask around for news. The name Siraj doesn't ring a bell. He isn't someone who would leave an impression. I've always had a hard time अरे फिर से आ गया the ये. academia pressures people by अरे labeling them भाई. as geniuses. But even so, the academia can't be left to you. Or perhaps I should say that I'm And I suppose they'd again, that's but my salary. Wait, what? At least I don't have to be an architectural designer who works himself to death just to get a smile from his You I took time out of Make sure to pay back the rent you owe me. I'm going to What? Are you trying to annoy me to You'll have to blame that on my financial freedom. अरे सब सुन लिया यार. Many choices to be honest. बस करो भाई. You on the other hand, can you think of any redeeming features? Artistry, So I'll have to bring you. Of course. But why would I do that? Can't you just be not pretending that you're Speaking of which, your friends won't say anything. There's no फिर से चालू हो गया भाई. No, it can't be. मेरे को एक्चुअली अभी जाना किस तरफ पे, मैं कंफ्यूज हुआ गया हूँ. अबे ये क्वेस्ट खत्म हुई या नहीं हुई? अभी भी चल रही है क्या? Silly Strange. Paimon's heard lots of people talking about this academia extravaganza thing earlier. Wonder what that is. Maybe there'll be fun things to do there. Let's go to the academia and have a look for ourselves. यार मेरे को फरहान अभी तक नहीं मिला यार, इस गेम में दर्द हो गया. Still waiting for Farhan. A moment, if you would. Are you two the famous Traveler and Paimon by any chance? No. We sure are. And who are you? My name is Wikas, a member of the Academia Extravaganza Planning Committee. Have you two heard of this festival? Only just now. And that's exactly why we're here. Is that so? Looks like our advertising is working. Since you're both interested, would you mind if I gave you a brief explanation of the event? अबे इवेंट चालू होगी बे ये तो. That would be helpful. Thanks. So, the Academia Extravaganza is a grand event run by the Academia with a long and storied history. अच्छा To जी. be precise, it can be divided into the Wisdom Gala and the Inter-Darshan Championship. अच्छा The क्या gala is held चैंपियनशिप है भाई? annually. During this time, all 6 Darshans will set up booths throughout the city and host guests to showcase the most fascinating aspects of their school, and thus increase their influence. On the other hand, the championship is held once every 4 years. Each Darshan will send a representative to vie for the position of Grand Champion. This year, the gala is being held alongside the championship, so the mood in the city is, as they say, at an unprecedented fever pitch. Got it. Cool. Thanks a bunch for the detailed explanation. You're most welcome. Answering questions regarding the Academia Extravaganza is my job. And I actually do have something I would like to ask the two of you. हाँ तभी पकड़ा है हमको भाई. Need our help with something? Obviously भाई काम कराएंगे हम के Let me पास. begin by saying that this year's Academia Extravaganza is of utmost importance to us. Lesser Lord Kusanali and the sages came up with a plan for the Academia to recruit talented people from the desert starting next year. As such, we've invited a great number of desert dwellers to take part in this festival, so they can hopefully experience the Academia's atmosphere ahead of time. I've heard that the two of you are famous across both the rainforest and desert. With your participation, especially in the Inter-Darshan Championship, more people will definitely come to appreciate the festival. We are not academia's researcher, you know. Don't you just say that only Darshan representatives can take part? Exactly. Or do you mean you want us to join a Darshan? But then we would have to deal with exams and essays and stuff like that. और वो हमसे ना हो No पाए need to भाई. worry. The championship participants have already been selected. I mean to invite the two of you as guest commentators.
Your job will be to observe and record every part of the competition. There's no pressure. ये क्या Just काम दे follow दिया रे each match बाबा. and enjoy the festival. Aside from that, we'll also prepare some compensation for your efforts. You won't अच्छा have to फिर work ठीक it है. for free. फिर ठीक है. फिर ठीक है. अगर ये लोग हमें प्रीमोस दे रहे हैं तो कुछ भी करेंगे भाई हम. Who are the participants anyway? Will there be other commentators? Yes, 2 others in fact. कौन है? Their कौन है? कौन है? responsibilities will be somewhat different from yours. One of our organizers will explain the details to you later at the main venue. So, how about it? Would you like to take this commission? We'll give it a go. Having fun while getting paid? This sounds awesome! The main event venue is at the outskirts of the Citadel of Regzar, and the organizer you're looking for is Karina. Tell her the situation. Hey, and she'll get Karina. you set up. Karina Kapoor. The championship is going to begin soon. I wish you a good experience serving as commentators. If you have any doubts, come find me anytime. ठीक है. Off we go! ठीक है भाई. ठीक है. भाई मेरे को तो इवेंट में डाल दिया सीधा. अभी तो स्टोरी क्वेस्ट खत्म की मैंने. ये क्या बात हो गई? इवेंट डाल दी ना? मैं डाल दिया रामचंद्र. ये क्या आ गई? नई इवेंट आ गई. अबे भाई कितनी इवेंट आएगी? अच्छा ये भी चेंज हो गया. ये तो करा ही नहीं है भाई हफ्तों से. सालों से करा नहीं भाई ये तो. अभी इस नाम की कोई चीज़ होती वो तो मैं तो वो भी भूल गया था इस गेम में. यही करे भाई. तो ओके गाइस दैट इज इट फॉर टुडे स्ट्रीम. होपफुली गाइस एंजॉय द स्ट्रीम. अगर आपको स्ट्रीम में मजा आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारी गेंशिन इंपैक्ट, होंकाई स्टार रेल, वैलोरेंट, फैस्मोफोबिया और भी बहुत मजेदार सी गेम्स. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, गुड नाइट. गुड नाइट? वेल वेट व्हाट? हैव अ गुड डे. बाय बाय, सी यू सून. बाय बाय. बाय बाय. Toodaloo.